thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly.
I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly.
I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. हेलो, क्या हुआ? ओके, टेक्निकल इशू, वी विल रीडू. We will write back. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes.
for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly.
know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly.
right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes.
Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. हेलो, आई एम बैक पार्ट 2. ठीक है. सो टुडे आई विल बी रिव्यूइंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट. राइट, अभी ये प्रोजेक्ट जो मिला है मेरे को स्टूडेंट के पास से, उसका फर्स्ट यूनिटी प्रोजेक्ट है. राइट, ही हैज़ क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट इन अंडर 3 weeks एंड उसका लेक्चर्स को ऑलमोस्ट 1 month या 2 months हुआ. आई मीन 1 to 2 months के बीच में हुआ. So yeah, it's his first project and I'm going to review it and try to make it better, or maybe even recreate it if even required. So I hope he and other students learn from what can be and what there is. So the first thing I'm going to do is सबसे पहले उसका exported application play करके देखूँगा. Alright, and then I already have the project open because of course आधा घंटा लिया स्ट्रीम चालू करने में, टाइम पास थोड़ा ना करूँगा. देख, एप्लीकेशन भी खोल के रखना चाहता है. ठीक है, ओके. साउंड बहुत आ रहा है मेरे को. ऑलराइट, सो सबसे पहला लुक, फर्स्ट इम्प्रेशन, यहाँ पे लाइव क्यों है. इस टेक्स्ट का कलर आई गेस और बेटर हो सकता है. बाकी डिज़ाइन वाइज ठीक है, उसने बेसिक यूनिटी डिज़ाइंस वगैरह यूज़ किया, सो आई डोंट थिंक वी शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट दैट. बट ठीक है, उसके कंट्रोल में जो चीज़ें था, जैसे इसका कलर हो, आई गेस बेटर हो सकता था. उसके कंट्रोल में वो चीज़, बाकी चीज़ें बनाने के लिए ठीक है, इट्स फाइन. वी आर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट, नॉट डिज़ाइनिंग पार्ट. बट फिर भी ठीक है. और पर्पल एंड ग्रीन पैलेट. Alright, so चीज़ें उड़ रही है. We have to click them. Alright, and we also have a pan person trail. Right? ठीक है. So yeah, we just have to kill each and everything we see. But that's not it. According to a developer, that is Restaurant Meat, you don't have to kill the bad objects. There are 2 types of objects: bad objects and good objects. The skull and the bomb you see will detect your score if you hit them. Like see, मेरा score 55 है, I'll click the skull, it goes 50. But if I click good objects, it's going to increase my score. Also, don't have to let go of more than 3 good objects during the play session. If so, then the game would be concluded and I would have to restart, which brings me back to the main menu. एंड यहाँ पे म्यूज़िक वापस से ब्लास्ट होने लग गया. ठीक है, कुल. सो विल ट्राई टू गो डायरेक्टली टू हार्ड लेवल बिकॉज वाई इवन गो मीडियम. ठीक है, सो कुल. ओके, सो देर आर अ फ्यू थिंग्स कि कभी कभी गुड ऑब्जेक्ट्स पूरे स्क्रीन फिल नहीं करता. दे जस्ट गो बैक आफ्टर कोलाइडिंग विद अ बैड ऑब्जेक्ट. सो आई हैव नो अमाउंट ऑफ रिएक्शन टाइम लेफ्ट इन ऑर्डर टू क्लिक दम. लाइक वो आके फटाक से 1 सेकंड के अंदर निकल भी जाता है वापस से.
एंड इमीडिएटली मेरा लाइव्स काउंटर घट जाता. सो ऑलराइट, दैट्स अ बैड थिंग, बट ठीक है, डजंट मैटर, इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट, एटलीस्ट कंप्लीटेड, दैट्स व्हाट मैटर्स. राइट. एंड एक और मस्त चीज़ देखना कि क्विट बटन चलता है कि नहीं. चलता है, नाइस. ओके. उसने मेरे को बोला था वो क्विट बटन कोड करना भूल गया, तो उसने एक और बिल्डिंग निकाल के दिया था बाद में मेरे को. ठीक है. सो नाउ टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट. दिस इज द प्रोजेक्ट. राइट. एसेट्स के अंदर वी सी 3 थिंग्स. फर्स्ट, टेक्स्ट मैश प्रो एसएमसी पैक 1. ओके, टेक्स्ट मैश प्रो, वी नो व्हाट दैट इज. यूनिटी का इनबिल्ट टेक्स्ट मैश प्रो system. That is a package that allows you to create UI texts, which was created by a third-party user and then later acquired by Unity, and now they are selling it as their own, like they do with other stuff usually. Right? They buy out plugins created by others or popular plugins created by others. Right? जैसे कि बोल्ट का हुआ था, बोल्ट भी विजुअल स्क्रिप्टिंग फिर यूनिटी ने एक्वायर कर लिया. इट्स फाइन. ऑलराइट. So now we go to SMC pack. There is a readme. Alright, it looks like this folder should be named as third party. Right. Pack bonus. ठीक है. What are these things? क्रॉसर है, लेकिन क्रॉसर तो यहाँ पे. What are this crossers? ठीक है. कुल इट इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है. सो आई गेस इसको बेटर येट थर्ड पार्टी या फिर अ फोल्डर कॉल्ड एज एक्सटर्नल में डालना सेंस बना था. सो वी कैन जस्ट स्ट्रेट अप इग्नोर दैट. ठीक है. देन वी हैव एसेट्स पे मेन, which is what I recommend all my students to go by the convention. Right? कि always name everything that you're creating in a folder called as main, and also prefix it with a 0 so that वो हमेशा left में रहेगा, top left में. So you can just flick to it if you ever require, irrespective of the project window का size. It's not going to change its position. Right? Okay. You can always just flick to it. सो ये थोड़ा आदत सा पड़ गया मेरे को. ठीक है, इट्स प्रेफरेंस. कुल. उसके बाद वी हैव दिस प्रोटोटाइप 5 स्टार्टर फाइल्स के अंदर. प्रोटोटाइप 5 स्टार्टर फाइल्स एक और फोल्डर है. दिस इजंट रिक्वायर्ड, सो विल ड्रैग दिस आउट एंड डिलीट द डुप्लीकेट फोल्डर. Aim trainer. I don't have an option to add mods. Okay. Cool. अभी scenes पे it seems to be the main game scene, and then on the scripts we have all the code available for the game. Surprisingly काफ़ी कम कोड है. Let's also see और कितने scripts हैं. इतना ही है पूरे गेम में. This is great. The total amount of scripts required to create this game are 8. This should be quite easy to make or even recreate in a span of 3 to 4 hours. Then yes, background music, course library वगैरह. ठीक है. प्रीफैब्स के अंदर उसने काफ़ी सारे प्रीफैब्स बना के रखे, separating bad object and good objects. Right. Then he has this particle system and starter pack. अभी स्टार्टर फाइल्स के अंदर क्या है. ओके, इट्स अ पैकेज, नेवर माइंड, वी डोंट वांट. अच्छा, इसी का पैकेज होगा थर्ड पार्टी का. सो अगेन अभी थर्ड पार्टी के फाइल्स मेरे को इधर दिख रहे हैं मेन के अंदर. दिस शुड नॉट हैपन. राइट, दिस शुडंट बी हैपनिंग, बट ठीक है. कुल. ये थोड़ा तो कुल. आई गेस विल जस्ट स्टार्ट रिव्यूइंग स्क्रिप्ट्स. फर्स्ट लुक at game manager. ठीक है.
those are a lot of directives. ठीक. सो मेरे को जाते जाते 7 मैसेजेस आ गए कि रिडंडेंसी भर भर के इसके प्रोजेक्ट में public and serial as field isn't even required. So let's get rid of all that. Right. It says start message is empty. We don't need that. Get get rid of redundant comments as well. And ठीक है. यहाँ पे bit says in direction is redundant. So alright, it is already a game object. And naming rule violations, I guess we can skip that one. Right, so ठीक है. Let's look at it from the start. What do I have here? Target. Right, I'll go back to Unity and I'll try to understand what each and everything is in here. Alright, we have target. We have 4 objects. Cool. All of them are targets. Correct. Then I have text mesh to scope text, live text, game over text. Now this suggests me that this is not only a game manager, this is also a UI manager. Right, that is in-game user interface manager. I mean that shouldn't be technically a part of game manager, but since इसका game manager काफ़ी छोटा है, अभी issues नहीं आएगा. Okay, again this is wrong in literally every scenario. This things shouldn't exist in something called as a game manager.cs. Alright, ठीक है. Cool. So यहाँ पे इसने स्कोर टेक्स्ट लिया हुआ, इसने लाइव टेक्स्ट आई गेस निकाल दिया. अच्छा, वो आई गेस रन टाइम पे असाइन होगा. देन देयर इज द गेम ओवर टेक्स्ट जिसको डिसेबल करके रखा हुआ एंड वो फॉरवर्ड होता है. कुल. Then he also has title screen, volume slider, audio source and everything else, जो basically again UI का part है. So again, this isn't supposed to be a game manager in that case. Right. The part where it is calculating or storing live scores or is game active members are ethically allowed to be present in the game manager. Alright, but again I would call this gameplay manager instead. Game manager, as per my preference, it might be wrong, is only supposed to manage the entirety of the application and all of its scenes. Alright, so ठीक है. And there is also an input code in game manager. Now this is going to lead up to a good amount of confusion even in its scripts. Like मेरा input है कहाँ पे लेगा? The game manager would be the last place to assume for an input code. Right? Like who would have thought कि game manager में उसका input का logic रहेगा? So again, this is ethically wrong. ठीक है. Okay. Okay, no, never mind, I was wrong. मैंने देखा नहीं function game pause है. हाँ, that's fine, yeah. I overreacted, I'm sorry. ठीक है. Start game. Is game active? True. Cool. Score. Find, alright. When is start game called? Start game is called into set difficulty, and when is set difficulty called, it is added onto on click. So when is on click invoked, and what is on click? So we need to go to definition and we need to find all references. What is it never called? So this event is never invoked. Alright, cool.
so that just confuses me even more. Yeah. So start game के बाद we have update lives, update score to 0. ठीक है, ये अच्छा चीज़ लगा उसने, lives को कितना वैल्यू लगा, passing it on as parameter and updating score. But again UI manager का part है. Alright. Then there is an I numerator that spawns target while the game is active, and every certain amount of seconds रुक के वो spawn करता है, I guess. Yeah. Alright. Then there is a game pause. Is game paused and pause dot set active. What is pause dot set active? Pause is a game object. Alright. अच्छा, वो text. Alright. Pause text. Alright. Then there is game over, and then there is restart game. Now the only thing that I think should be relevant in this code is the restart game function, the pause function, and this input. Alright. And this things. Right. Target अभी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. So that's the game manager. Cool. Now after I pick off the game manager, what I want to do is I want to take a look at इसका sensor या cursor manager. Alright. A lot of managers but no executors. Like if there is something called as a cursor manager in my scripts, I expect there to be a class called as a cursor as well. Like it is managing the cursor. So where is the cursor? Right. So this class also shouldn't be in that case named cursor manager. It should be just named cursor that handles literally every logic, including the managing logic for that cursor. Alright. ठीक है. Manager classes are only made when they are used to manage another objects. Right. So ठीक है. If it is managing itself, then it isn't a manager technically. Zombie code bad. Alright. Format it. Removing white spaces, and alright, cursor manager. I guess this allows us to move our camera here and there. Right, so there is a lot of find here, find this, find that, and everything else. Alright, ठीक है. Game object dot find cursor manager get component. Okay, trail and box collider के लिए he tried to get this, and alright. क्या हुआ Discord? What? Did I accidentally click Discord? Alright. Cool. So cursor manager लगा कहाँ पे? We can find it right here. If we had Unity open, let it load. Let's try again. No? Alright, cursor manager यहाँ पर दिख गया मेरे को. Alright. So cursor manager has trail renderer. It has box colliders. Alright. Now उसने already drag and drop करके यहाँ पे डाल दिया trail renderer, right? So why is it finding its own game object and then getting component trail renderer from it? This is again redundancy, right? This isn't going to change anything. Cursor manager लगा कहाँ पे? यहाँ पे लगा है. We see it's only one instance of cursor manager exists using this one asset reference value, right? If यहाँ पे लगा है, why does it need to find itself when it can just get the component, right? And ठीक है, get component वगैरह नहीं करना, then you can just drag and drop. Alright. Now लोग पूछते हैं, especially intermediate students जिनका half the course complete हो चुका है. I mean that's when the question naturally arises. When is it a good practice to drag and drop references? Right. ड्रैग एंड ड्रॉप कब करना चाहिए, कब सही होता है वो चीज़?
अभी लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, रेफरेंस इतना मत लिया करो, दूसरा चीज़ का डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, बट ऑफकोर्स नो गेम कैन लिव विदाउट डिपेंडेंसी. सो कैन यू जूम इन अ बिट? श्योर ब्रदर. राइट, ठीक है, कुल. सो श्योर, डिपेंडेंसी आने वाला. एंड डिपेंडेंसी कब क्रिएट होना चाहिए? व्हेन इट इज बिटवीन the object and its child objects. When a dependency between two different objects are created that are not related, in that case it is considered to be an effective dependency. Like it can affect the game possibly in a bad way or in a good way, whatever. I mean usually not in a good way, but ठीक है, affect कर सकता है. Either it would affect anything or either it will affect the game in a bad way. Because you have to remember, onto every scene to add the same type of object onto that object where dependency is created. But when a dependency is created between itself and its child objects, in that case it doesn't matter if this object exists in whatever scene, it is automatically going to reference all of its child objects, right? So सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि डिपेंडेंसी कब रहना चाहिए, रेफरेंसेस कब रहना चाहिए, इज दैट मेक योर गेम ऑब्जेक्ट अ प्रीफैब, राइट? इफ उसका प्रीफैब का कॉपी तुम लोग डालते हो एंड यहाँ से कुछ गायब नहीं होता है, देन वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए. जो चीज़ गायब होता है वो यहाँ पे डिपेंडेंट ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं रहना चाहिए बेसिकली, राइट? ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका, राइट? दैट इज अगर उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट या वो खुद ऑब्जेक्ट पे कोई कंपोनेंट रेफरेंस करा, देन इट्स फाइन. इफ समवेयर एल्स, देन ऑफ कोर्स यू रिक्वायर एक्सप्लिसिट कोड, राइट? ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको सीरियलाइज करके नहीं रहना. श्योर, वी कैन सीरियलाइज कैमरा, बट उसका रेफरेंसिंग के लिए वी नीड टू राइट अ स्पेसिफिक कोड. अभी इसने क्या किया हुआ है, इसने बाकी चीज़ों में ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा हो. अच्छा नहीं, यहाँ पे किया उसने मेन कैमरा, बट ठीक है. एनीवेज, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस. व्हाट यू कैन जस्ट डू इज go to camera.main. That is also basically the same thing. Now this camera.main is going to work as long as you have the main camera tag set on your main camera, right? ये टैग रहेगा तो ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा. अरे ठीक है, क्लियर गया? श्योर, कुल. श्योर, अभी सबके बीच में अचानक से सेट कर्सर mode dot auto. All right, now it is finding game manager. All right, ठीक है. One thing I appreciate, at least इसने singletons यूज़ नहीं किया. Right, now singleton wouldn't even matter in a game like this, right? वहाँ पे चलता है. in a big project, sure, Reddit पे काफ़ी सारे डाउनलोड्स मिलता है singleton का नाम लेने पे, but ठीक है, in this game it would be fine even if implement हुआ रहता. but always again try to avoid singletons if you can, right? वरना singleton डाल रहे हो then उसका एक काफ़ी अच्छा बैक एंड पैटर्न लो, right? so ठीक है. so it is trying to get game manager. हर एक जगह पे find object हुए जा रहा है, right? like कितना ही game manager को find किया होगा. Every script I go, I see at least one find this, find that, right? so that is a lot. cool, we need to rectify that. चलेगा, आता है बाद में उससे. अभी के लिए what would be the best thing to do without using a singleton as of now? I definitely don't know what the best thing is, but one of the option is to create a composite.
Okay, अभी I don't know what to name this script as well. So अभी के लिए I'll just name it composite. Right? Composite means सब एक साथ. Right? It definitely requires a prefix or a suffix in its name. But ठीक है, I'm just writing the message. Now what do I require in here is composite के अंदर I'll create public game object या game manager, right? Cool. Then whatever we require, अभी let's say ये UI का पार्ट तो फाइंड होना ही नहीं चाहिए कभी लाइफ में, बट ठीक है अभी के लिए डाल देता बिकॉज ही इज यूजिंग इट. So let's assume we need to have this object. I am just describing the purpose of composite here, right? टेक्स्ट कभी composite या किसी देर भी फाइंड नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट मैश फ्लो या एलिमेंट्स वगैरह, बट ठीक है अभी के लिए composite के लिए एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, राइट? सो ठीक है. So all these things exist. Now what you want to do with composite is add it onto your manager the game object, right? Now this is a script that is going to be unique in every different scene. So what you need to do in all the scenes are यहाँ पे हर एक चीज़ों को drag and drop करके रख दो, right? What are score lives? What are lives texts, right? This is one way of doing it. This is not the best way of doing it, but this is one way of doing it, which is better than what Meet has done as of now, right? And then what you want to do in other scripts is either you can create this as a singleton, right? A singleton, it's fine. Or what you can also do is you can just find a composite instead in all the scripts. So you don't have to remember to find different game objects. You just have to remember to find a composite game object. That's it. Right? Still, इसका find वाला method use करता है. This is what I would call a beginner friendly ethical way to architect. Right, so I'll just write here components, right? Abhi I'll just say components dot game manager, right? I can access it. Game manager में मेरे को जो चाहिए मेरे को मिल जाएगा, easy. It's just that I only have to find components game object dot find object by type, not even by name, right? Composite. Then also find first object by type, better. Cool. So इसके अंदर तुम लोगों को सारी की सारी यूजफुल चीज़ें मिल जाएगी, ओके? बट ठीक है अभी के लिए आई जस्ट गेट rid of that as well because we are not actually going to use composite in any way. या फिर उसको छोड़ देता, भूल जाता इंस्टेड ऑफ रिकम्पाइलिंग करने से अच्छा वापस. राइट, देन और क्या चीज़ है कर्सर मैनेजर पे? अपडेट माउस पोजीशन. ऑल राइट, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. इट यूजेस स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट एंड what is this? Okay, Z पे it used 10. alright, एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ता बट ठीक है. ओह नहीं, ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि उसने कोलाइडर्स यूज़ किए. राइट, एवरीथिंग यू सी जब मैं माउस क्लिक करता हूँ उसका जो ट्रेल आता है, दिस इज़ not actually recasting anything on the screen. It is only using colliders onto my mouse. एक आ रहा है null reference exception. Did I break something? What have I broken? No. Composite मैंने ऐड नहीं किया बराबर. लाइन 26 और 17 को बदला था.
चलेगा, नेवर माइंड, वापस से आएगा यार, आई गेस आना होगा तो। So there are multiple errors. एक 26 पे errors, it is not able to find game manager. हाँ बराबर, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का नेम चेंज किया हुआ है. सो अगेन दिस प्रूव्स कि दिस डिपेंडेंसी इज सो बैड. इफ ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करता हूँ देन द गेम इज ब्रोकन. ठीक है, in that case we'll just use find object by type, again game manager instead, object of type, object by type, whatever. Right, वो वाला error solve हो गया. Now these are different errors. Now this is onto difficulty button जो again same चीज़ यूज़ करता है. So ठीक है, copy paste, developer's most powerful shortcut. करेक्ट, ठीक है. तो तीनों डिफिकल्टी बटन पे उसने फाइंड करके रखा, मतलब एक ही चीज़ 3-4 बार फाइंड हो रहा है. राइट, देखिए उसका ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसका साउंड आ रहा है बार बार, मैं इधर ही म्यूट कर देता हूँ मैं. राइट, सो ठीक है. नाउ दिस इज एक्चुअली अ कोलाइडर. राइट, जब मेरा कर्सर एक्टिव होता है, where is it seen? Ignore the errors. ये कर्सर मैनेजर है, ये सेंसर है. यप, ऑलराइट. सो आई गेस ये चीज़ है. सो इफ आई टर्न ऑन गिज़मोस राइट नाउ, सेंसर है कहाँ पे? अच्छा नहीं, वो तो नीचे का सेंसर है. सो कर्सर का कहाँ पे? अगेन आई एम लुकिंग एट दिस प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑलराइट, जस्ट चालू किया मैंने, वेट करो. कर्सर मैनेजर है बस. अच्छा, कर्सर मैनेजर में है बॉक्स कोलाइडर, पहले दिखा क्यों नहीं मेरे को? ऑलराइट, सो क्लिक होने पे स्टार्ट होता है एंड यू कैन सी दे इसका बॉक्स कोलाइडर है. राइट, जो बाय द वे 3D स्पेस में बना हुआ है. सो आई थिंक इसके अंदर जो भी आता है उसके ऊपर से इट इज़ डिटेक्टिंग कि कौन उससे कोलाइड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा उससे कोलाइड. ऑलराइट, सो ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू लुक एट ऑल दिस एरर्स. अगेन सेम इश्यूज. आई गेस फिर सब इशू इसी टाइप के मिलने वाले अपने को. सब 3693 वाला एक है, यहाँ पे भी होगा. गेम मैनेजर, अच्छा उसको नहीं मिला इसके लिए, बराबर. ठीक है, लेट्स ट्राई टू प्ले द गेम अगेन. जस्ट होपिंग कि कुछ टूटा नहीं है, बराबर है, सब चल रहा. हो गया, नेक्स्ट फिक्स्ड. आई विल गेट रिड ऑफ अदर कोड्स एज वेल. राइट, वी वर ऑन टू कर्सर मैनेजर एंड यहाँ पे उसका माउस पोजीशन जा रहा है, अपडेट हो रहा है. ठीक है, अपडेट कंपोनेंट्स. आई गेस वो अपडेट कंपोनेंट्स कॉल कहाँ पे हो रहा है? अच्छा ठीक है. सो माउस डाउन पे स्वाइपिंग थ्रू जाता है, की अप पे, सॉरी की अप या की डाउन जो भी है वहाँ पे ट्रू फॉल्स जाता है वगैरह. एंड बेस्ड ऑन दैट कंपोनेंट अपडेट होता है. कूल, गुड टू नो. यहाँ पे है कोलिजन एंटर के अंदर इट इज़ ट्राइंग टू अगेन गेट द कंपोनेंट बाय टारगेट. सो ये चीज़ 2 बार लिखा हुआ, गेट कोलिजन या जो एक गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट टारगेट. वाई डू यू नीड टू कॉल इट ट्वाइस? राइट, सो ठीक है. अभी ना मैं यहाँ से थोड़ा रिफैक्टरिंग चालू करता हूँ. राइट, आई स्टार्ट विद कर्सर मैनेजर एंड गेम मैनेजर में लास्ट में जाऊँगा, बिकॉज गेम मैनेजर इज़ द फर्स्ट कोड आई रीड बट द लास्ट कोड टू मॉडिफाई. राइट, उसका UI मैनेजर अलग से बनाना पड़ेगा, थोड़ा त्रास है. ठीक है. सो सबसे पहला चीज़ अभी के लिए, फॉर ईज ऑफ कंटेंट
मैं गेम मैनेजर को सिंगलटन बना देता हूँ. राइट. अभी सिंगलटन किस तरीके से बनाया जाता है, अच्छा खासा सिंगलटन. राइट. सो उसके लिए मैं थोड़ा तुम लोग को जेनेरिक्स बताता हूँ या जो भी है उसका बैक एंड कोड बताता हूँ. नाउ ऑफ कोर्स सिंगलटन इज बेसिकली a bad practice, right? But in this scenario, in this specific case of such a small game, it is fine. Okay. Again, I don't condone by singleton, but take for now it's fine. Right? You can also get references of game manager onto every script, but you can see कितने script है यहाँ पे. Right. So ठीक है. Now also the game should be designed in a way कि इतना game manager का references का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए. So we'll change that. I will try to recreate this project with lesser dependencies, but for now, for ease of accessibility, I'll just create a singleton. Right. So ठीक है. Right. So in order to create a singleton, I'll just say emp37. Yeah. अच्छा अभी तक लोड हो रहा. राइट आ गया. राइट नहीं अभी तक. लेट्स ट्राई रीस्टार्टिंग विजुअल स्टूडियो. अभी आ गया. राइट. सो मैंने एक बना के रखा हुआ है यहाँ पे. विल जस्ट यूज कि यहाँ पे आया टू थिंग्स. फर्स्ट इज अ जेनेरिक एंड अनदर इज अ रजिस्ट्री. राइट. कमेंट लिख के रखा है मैंने, सो दैट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा चीज़ क्या है. सो वी कैन ऑल्सो यूज जेनेरिक्स. दैट इज़ द ईजियर इम्प्लीमेंटेशन of type game manager. Now which generic implementation do I want to proceed with? So I have two, dynamic and lightweight. I would definitely prefer lightweight as of now. Oops, end of line नहीं आया. So lightweight पे मैंने थोड़ा बहुत notes लिख के रखा. अभी of course lightweight is a singleton that I grabbed from Hextend Studios, जिसको अगर तुम लोग अपने ब्राउज़र में लिखोगे extend singleton, you are going to find so many singleton patterns right here. राइट. उसमें से जो सिंपल वाला पार्ट है वो मैंने डायरेक्टली यहाँ से योइंक किया. राइट. एपीटी अपडेट सिंगलटन इज नाउ माय प्रॉपर्टी. ठीक है. ठीक है. उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए मैंने एक्सेप्ट फॉर सम मैसेजेस एंड एक्स्ट्रा समरीज. द डायनामिक इज द वन जो मैंने लिखा हुआ. अगेन बहुत ही बेसिक से इम्प्लीमेंटेशन है, बट दिस वुड बी एन ओवरकिल. दिस जस्ट इंस्टेंशिएट्स द गेम मैनेजर इवन इफ इट डजंट एग्जिस्ट ऑन द सीन. राइट. ठीक है. फॉर नाउ वी डू रिक्वायर लाइटवेट बिकॉज हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली सीन पे प्लेस कर रहा है. सो अगेन इफ़ यू वांट टू लुक एट सिंगलटन डायना जेनेरिक्स, यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो. यू कैन ऑल्सो विजिट दिस वेबसाइट जहाँ से मैंने सिंपल उठाया. राइट. एंड cool, that's it. So now we can reference to everything that exists within the game manager. So सबसे पहला चीज़ मैं क्या करूँगा, कर्सर मैनेजर से उसको निकाल दूँगा. राइट. आई डोंट नीड इट राइट हियर. राइट. नाउ आई वांट टू से इफ game manager dot instance dot s गेम एक्टिव. अभी ये बोल रहा है गेम मैनेजर का ज़रूरत नहीं है. वाई? ओह यस, बिकॉज इट्स गोइंग टू रिकमेंड मी टू यूज़ सिंगलटन डॉट लाइट वेट इंस्टेंसेस. बोलता है शॉर्ट फॉर्म है ये, बट एक्चुअली लॉन्ग फॉर्म हो गया. सो आई जस्ट यूज़ दिस. अभी इसका भी एक मस्त फ़ायदा कि
सिंस मैंने सिंगलटन्स को उप्स किधर गया, हाँ, सिंस मैंने सिंगलटन को एक और जेनेरिक क्लास के अंदर रैप करके रखा हुआ, राइट. सो क्या होएगा, वेन एवर आई रिफर टू देम डायरेक्टली इट्स गोइंग टू basically darken their names, say कि there is a better way to do it just in Visual Studio, I guess, because बाकी ID में try नहीं किया मैंने. So I am also able to recognize कि this class is now a singleton. Of course उसके बाजू में instance दिखता तो वो भी है, लेकिन just color highlighter से थोड़ा easy spot होता है, right. Also यहाँ पे भी एक छोटा सा फ़ायदा कि I can just create instance one and different implementations can manipulate that variable differently. So that is generic static class that contains two abstract classes. Now sure, there is also an argument that abstraction would be an overkill, but you don't want to drag and drop this object onto your monobeer. अभी वो of course यहाँ पे से नहीं होएगा क्योंकि दो implementation यहाँ पे, but still I don't also want to create a constructor for this type. So abstract prevents that. Of course we can also go to the route of making the constructor private, but then it wouldn't inherit, so we have to make it protected. So alright, it's fine, I just went with abstract instead. Alright, cool. So यहाँ पे बोल रहा है गेम मैनेजर डजंट एग्जिस्ट. श्योर, अभी हम लोग यूनिटी के सजेशन सॉरी विजुअल स्टूडियो के सजेशन अप्लाई करेंगे. इट सेज न्यू कैन बी सिंप्लीफाइड. श्योर, या रिस्टार्ट गेम, यस करेक्ट. पब्लिक फंक्शन को स्मॉल नेमिंग इज बैड. ठीक है. नाउ सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा. ऑलराइट, दैट इज एफ कोलिजन डॉट ट्राई या फिर गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्राई गिट कंपोनेंट, राइट. वी वांट आउट target t, right, and if t is found we simply just use t dot destroy target का function जो उस पर assign हुआ. So we get rid of this, right, cool. Now अभी क्या बोल रहा है, collision dot game object compare tag, if it is bad and score is less than 1, in that case game over बोलता. Now this tells me कि this entire thing should also be a part of the game manager script. But ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे रख देता. I'll come back to this later. I need more context to make it better. Right, ठीक है. सबसे पहला चीज़ इनका नेमिंग सॉल्व करता जो भी है. राइट, दैट इज ठीक है. ट्रेल बॉक्स कोलाइडर, और फिर यहाँ पे इस अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया फॉर सम रीजंस. ठीक है, विल फोर्सफुली यूज अंडरस्कोर्स. आई डोंट लाइक अंडरस्कोर्स, बट ठीक है, इफ ही हैज़ यूज्ड इट then I must use it as well, right. अभी यहाँ पे जो चीज़ है, I guess we can also assign it like this. Also make sure कि camera is on focus, कि we are using or referencing to camera mean, right. What order we are going in while declaring declaring this members, we should also define them in the same order, right. ठीक है. Then we have mouse position. Cool. Mouse position, I'll name it like this. Then there is cursor hotspot. What is cursor hotspot? I have no idea, no clue whatsoever. But again, I know कि इसका H should be capital, right. It is in taking 10 by 10,
So within update mouse position, all right, and then why is there even need of a mouse position? इसका ज़रूरत क्या है? Isn't transform going to give the same result? Right. I mean वो भी same ही result देगा ना? Like you have two vector threes. यहाँ पे अपने को serialized view में दिख रहा है वो चीज़, and वहाँ पे भी वो same value store हो रहा है. It doesn't make sense. Sure, readability extra चीज़ define करता है क्या, but instead I guess इस case में comment ही better रहेगा. So I guess we can just write it like this instead. Right, that is we update mouse position. Right, update component. Alright, now update component के बदले I'll name this enable cursor, and this is going to be a bool value. Better, right? ठीक है. And also one more thing, if main functions लिख रहे हैं then सारे के सारे main functions एक साथ आने चाहिए. Like थोड़े main functions के बाद I see some custom functions and वापस I see yet another main function. It just doesn't make sense, right? So ठीक है, update यहाँ पे लिखेंगे, collision enter यहाँ पे लिखेंगे. Cool. Now look at the code. Is it looking better than before? I think so. ठीक है. We have trail, box rider वगैरह जो भी है. और क्या था हम लोग अपडेट पे थे अभी, right? If is game active, now I don't क्या होता है अभी मेरे को उतना समझ नहीं रहा है कि इसका ज़रूरत क्या, right? I mean I'm not trying to sound negative, it's just that मेरे को सेंटेंस नहीं मिला कुछ. गेम एक्टिव को किससे रिप्लेस करेगी अभी के लिए? आई एम थिंकिंग अबाउट दैट. वाई डू वी इवन रिक्वायर गेम एक्टिव? गेम एक्टिव स्टार्ट होता है, श्योर. अब इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? बटन वाला, राइट? बटन, श्योर. बटन कॉल नहीं हो रहा वो एड लिस्टनर. अच्छा हाँ, उप्स उप्स उप्स, अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ वो चीज़, राइट? अभी ये जो सेट डिफ़िकल्टी वगैरह जो भी कॉल हो रहा है ना, दिस इज बटन ऑन क्लिक. ये बटन पे हो रहा है बराबर. अब ये बटन पे जो वैल्यू है उसका ऑन क्लिक पे सेट डिफ़िकल्टी जा रहा है. सो इतना मेहनत करने से अच्छा why don't we just drag and drop that, right? Because UI component है. cool cool, ठीक है. मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस कर भी नहीं सकता यहाँ पे. सो इस गेम एक्टिव के बदले we only have that option right now, right? गेम बंद कब होता? मैंने इस गेम एक्टिव सेट टू फॉल्स. तीन जगह पे, नहीं दो जगह पे. एक है गेम मैनेजर के अंदर ही, sure. Now there is also one big flaw that I just noticed. If game pause में game active false हो रहा है, then why is there even a need of a game paused boolean, right? यहाँ पे ना बोल सकता गेम एक्टिव है, हाँ भाई पॉज कर ले. गेम एक्टिव नहीं है, पॉज कर ले. ठीक है, कुल कुल, ठीक है. सो बाकी कुछ तो है नहीं यहाँ पे ज़्यादा. हाँ, ये एक चीज़ देखा मैंने, इफ स्वाइपिंग दैन, अच्छा बराबर है, अपडेट माउस पोजीशन बराबर है, ठीक है.
कुल, लुक्स गुड. बाकी का पार्ट कर्सर मैनेजर का. राइट, ठीक है. श्योर. मूविंग ऑन टू डिफिकल्टी बटन. राइट, अभी आई गेस आगे के कोड छोटे छोटे रहेगा. 2 बड़े कोड कंप्लीट हो गए जो इसका मेन गेम बना था. राइट, कर्सर मैनेजर के अंदर व्हाट आई से इज ट्राई गेट कंपोनेंट आउट बटन. श्योर ही नोस ट्राई गेट कंपोनेंट एग्जिस्ट्स. ठीक है, यहाँ पे अगर गेम मैनेजर निकाल देगा हम. राइट, एंड अपडेट का भी ज़रूरत नहीं है. गेम मैनेजर का एक ही जगह पे ज़रूरत है, स्टार्ट गेम विद डिफिकल्टी. ऑल राइट, सो दिस इज गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट स्टार्ट गेम डिफिकल्टी. ऑल राइट, ईजी फॉर नाउ. एंड देन वी हैव दिस बटन. अभी डिबग का भी फिर कुछ काम नहीं रहेगा. no no wait, I am trying to wait, let it load. ठीक है, अभी व्हाट आई सी इज ये 3 जगह पे लगा हुआ, इजी हार्ड मीडियम करके 3 अलग अलग जगह पे लगा हुआ. सो कूल. आई हैव दिस डिफिकल्टी बटन एंड एक बटन क्या करता है, ट्राई गेट कंपोनेंट बटन, और उसके अंदर डायरेक्टली स्टार्ट गेम डिफिकल्टी का फंक्शन डाल देता है. कूल. ऑन क्लिक पे. नाइस. डिफिकल्टी सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, इंटीजर. राइट, नाउ व्हाट वुड बी बेटर, this entire script is not even required. If we go to the start game function, it allows us to set integer in different ways. Correct. अब ये क्या बोलता है, इंटीजर लेगा 2, इजी पे लेगा 1, मीडियम पे लेगा 2, हार्ड पे लेगा 3. राइट, what we can just do instead in all 3 buttons is, sure this is a thing कि ये every scene पे ऐड करना पड़ेगा अपने को. So what Meet has done is he has automated this process by writing the code for it. Right, that है उसको हर एक सीन पे ये ऐड नहीं करना पड़ेगा. But again there are not multiple scenes, and what we can do is we can just copy the scenes as well. So this is not that big of a task, and even in different scenes there is going to be a game manager and a difficulty button if it exists. So that is not going to change stuff. Right. And ये मेन मेन्यू का पार्ट है. यूजुअली कोई से भी गेम पे मल्टीपल मेन मेन्यूज होते नहीं है. सो द बेटर थिंग टू डू वुड बी जस्ट टू गेट दिस मैनेजर राइट हियर, गो टू गेम मैनेजर, सेट डिफिकल्टी कहाँ पे, कहाँ गया, वाई, स्टार्ट गेम. अच्छा, स्टार्ट गेम पे ओ ओके, स्टार्ट गेम पे डिफिकल्टी. मैं सेट डिफिकल्टी को ढूंढ रहा था फिर. ओके, सो आई कैन गो इजी पे 1, मीडियम पे 2, हार्ड पे 3. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गेट रिड ऑफ द स्क्रिप्ट एंड आई कैन डिलीट दिस. राइट, सेम काम करेगा. लेट्स प्ले एंड लेट्स सी. ओके, रिस्टार्ट का भी उसमें दिया. हाँ उसमें सर नीचे था रिस्टार्ट का भी, उसमें दे के रखा था उसने. आर यू श्योर? हाँ रिस्टार्ट का मैंने कुछ पढ़ा नहीं. क्या मेरी आंखें मेरे को धोखा दे रही है? रिस्टार्ट का था क्या, देखा नहीं दे नहीं था यार. पता नहीं, लॉन्ग भी हो सकता है. कहाँ गया डिफिकल्टी? नहीं रे, इतना ही तो है. सेट डिफिकल्टी और क्या डाला? स्टार्ट गेम तो इसका नहीं है, ज़रूरत नहीं है, 100% नहीं है. और रिस्टार्ट पे ठीक है, रिस्टार्ट कर देगा वापस से. अलग रहेगा उसमें, कुछ अलग अलग इसमें दिया रहेगा. हाँ नहीं, ये रिस्टार्ट का अभी तक कोड देखा नहीं ना हम लोग ने. वो भी उसमें भी उसने गेम मैनेजर को रेफरेंस क्या रहेगा, कहाँ क्या देख इधर, कंपोनेंट आ रहा है. हाँ देखा? इधर आपको ये डालना पड़ेगा ना, गेम मैनेजर डॉट रिस्टार्ट गेम. रिस्टार्ट. अच्छा, मैंने फंक्शन का नाम कैपिटल किया था इसके लिए. हिसाब से उसमें हाँ ठीक है, नॉट एन इशू. बट ठीक है, सर गेम चल रहा है बराबर. ये
राइट रिस्टार्ट हुआ हो गया नेक्स्ट cool so now we go to X explosion practical effect why does this exist पार्टिकल सिस्टम why does this exist ये जीरो रेफरेंसेस है इसका ठीक है विकेट रीड अरे ठीक है वी दिस इज प्रतीक व्यास बाय द वे जो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहा था चैट्स पे राइट ये मीत इज हियर ऑन लाइव वाह सर वाह व्हाई यू डू दिस मीत हु हर्ट यू माय फ्रेंड मेरा नाम साउंड मैनेजर cool cool और आई गेस चेंज वॉल्यूम उसने किधर और बाइंड किया हुआ है वो स्लाइडर पे बाइंड किया होगा राइट सो ठीक है एंड फाइनली टारगेट आई गेस ये थोड़ा या एक और लास्ट बड़ा स्क्रिप्ट थोड़ा सा cool पार्टिकल कलर गुड टारगेट फटने में उसका पार्टिकल कलर होगा ऐसा मिनिमम स्पीड उसका मैक्सिमम स्पीड मैक्स रैंडम ऑफ व्हाट एक्स रेंज एंड वाई पोजीशन वाई नॉट एक्सपोज वाई पोज या एक्स रेंज वाई रेंज कि दोनों का मीनिंग डिफरेंट है आई हैव नो आइडिया नो कमेंट्स और समरीज आर प्रोवाइडेड राइट पॉइंट वैल्यू नो आइडिया लाइव्स टू डिक्रीमेंट 1 ऑल राइट आई गेस इसका भी टी कैपिटल आना चाहिए व्हाट द हेल मेरा कीबोर्ड हेलो अरे टारगेट कोल जो यूज़ नहीं हो रहा टारगेट आरबी टारगेट पार्टिकल सिस्टम एंड फाइनली गेम मैनेजर जिसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है ओके cool एमिट पैराम्स में क्या डाला है इसने पार्टिकल एमिट पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रॉय टारगेट पे इट प्लेस द पार्टिकल सिस्टम ऑलराइट cool अपडेट स्कोर पोजीशन वगैरह शेप एमिट सही है डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट ट्रिगर एंड ट्रिप अगेन डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट दो बार डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट लिखा है दो अलर्ट ऑलराइट एंड कंपेयर टैग बैड अपडेट लास्ट डिक्रीमेंट कंपेयर टैग गुड किधर गया तूने इज दैट नो कंपेयर टैग गुड गेम मैनेजर में सर चेक करो आई थिंक उसमें रहेगा मैंने गुड एक भी स्ट्रिंग नहीं देखा अभी तक ठीक है कूल सो ठीक है काफ़ी बेसिक सा गेम था इसका सबसे ये काम कर रहा है नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू improve everything alright ठीक है let's try to create this project from scratch alright मुझे भी थोड़े कोड का रेफरेंसेस देखना पड़ेगा जैसे कि माउस मूवमेंट वगैरह जो भी है रिकास्टिंग का स्क्रीन डेवलपमेंट जस्ट फॉरगेट कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना होता है सो वहाँ पे टाइम नहीं डालने के लिए आई जस्ट ऑल्सो कीप इस प्रोजेक्ट अलाइव राइट the first thing that we see in here is इसका UI right अभी मैं इसका सीन रीलोड करता हूँ that is इसके सीन पे जाके we'll just go to prototype 5 again and this is what we see the first thing is a manager sure so every scene you create
राइट, इसको भी नाम दे देता हूँ मेन। राइट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैनेजर। राइट, एंड मैनेजर के अंदर आई एम जस्ट, ये क्यों बोल रहा है मेरे को, राइट या मैनेजर के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट स्क्रिप्ट कॉल्ड एस गेम प्ले मैनेजर या फिर सेशन मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल गेम मैनेजर बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि गेम मैनेजर में एक्चुअली क्या होना चाहिए। राइट, आई ऑल्सो ट्राई टू टीच सम एक्स्ट्रा थिंग्स सच एज लोकल सेव, ट्राई करता हूँ, टाइम बचेगा तो जो भी है। Right. सबसे पहले आई ओपन दिस गेम मैनेजर एंड I will avoid using singletons here. I will try to avoid using singletons here. Alright, if time ख़त्म हो जाता then I might go that route. But ठीक है, सबसे पहला चीज़ गेम मैनेजर में होना क्या चाहिए। Right. We use the start function to first of all lock away vsync and to uncap FPS. अभी श्योर vsync वगैरह हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग से बंद करके रख सकता है। राइट, ठीक है। नाउ वाई इज द टॉपिक ऑन वी सिंक, राइट, बिकॉज दिस इज अ मोबाइल गेम, वहाँ पे वी सिंक नहीं होता। राइट, सो ठीक है, यहाँ पे वी जस्ट से डोंट सिंक एज लॉन्ग एज वी डोंट चेंज प्रीसेट्स। राइट, लेट्स ऑल्सो मूव टू वेरी हाई फ्रॉम अल्ट्रा एंड यहाँ पे भी डोंट सिंक करता। राइट, अगर एवरी वी ब्लैंक होता एंड आवर टारगेट एप्लीकेशन वुड हैव बीन एंड्रॉयड देन वो वहाँ पे इशू देता, वो वापस से करो नहीं बोलता वो, सो डायरेक्टली कर दिया। सो वी कैन ऑल्सो डू दिस वाया कोड और वी कैन डू दैट मैन्युअली। राइट, एंड यहाँ पे एवरी टाइम यू एक्सपोर्ट एन एंड्रॉयड बिल्ड इट इज़ लॉक टू 30 FPS। एटलीस्ट 2021 वर्जन्स में तो लॉक्ड होता था, अभी आई हैव नो आइडिया कि नए अपडेट में वो लोग ने अनलॉक किया है या नहीं। सो बेसिकली व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज application to target frame rate, we would set a target frame rate, right, that is public fps या फिर public int fps limit, right, या फिर target fps वगैरह, whatever name suits you best, right. सो यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन लगा दिया। राइट, नाउ वी आल्सो वांट टू मोर थिंग्स। पब्लिक void save, public void load. This functions will be responsible for saving and loading my high scores या फिर मेरा settings जो भी है। right, that is I'll call load on start, right, and on application quit I'll save. Cool. So cool. This is supposed to be the game manager, right? The thing that manages the entire application, not a single session. What usually people misunderstood for game manager is a session manager or a gameplay manager. But ठीक है, right? Generally वो यूज़ करते लोग, ये मैंने अपना preferences बना के रखा हुआ, which are totally ignorable as well. राइट, सो मैं लेफ्ट में राइट में देख के जो भी है तुम लोग हमसे जरा, बट कैमरा इधर है, मैं भूल जाता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर्स टाइम मेरा कैमरा यहाँ पे होता है। सो आदत पड़ गई। एंड किसी को चैट आया क्या, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। नो चैट्स। राइट, गुड।
So now, after having this gameplay manager, I am also going to create a settings menu. Okay. अभी दिस आर द टू स्पेशल स्क्रिप्ट्स जो अपना आइकन इनहेरिट करता है, राइट. ठीक है. अभी सेटिंग्स इज व्हाट आई यूजुअली कीप इन ए स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, राइट. ठीक है. अभी के लिए विल इज स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, बट इसको निकालना पड़ेगा बिकॉज व्हेन आई एम ट्राइंग टू सेव इट डिपेंड्स ऑन मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ सेविंग एंड लोडिंग के लिए. मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी यूजिंग जेसन बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट, एंड उसके लिए मेरे को एक दूसरा सीरियलाइजेबल क्लास चाहिए होगा, राइट, विच इज़ perfectly settings without the scriptable object, but also requires scriptable object to store everything. So for now I'll use or focus on scriptable objects abhi ke liye. Alright, so ठीक है. What am I going to keep at scriptable objects? Public int high score, public float volume. Okay, now the thing is high score should not be a part of settings also, right. High score should be a part of records, something like records. इस हाई स्कोर का सेटिंग क्या तुम लोग हाई स्कोर चेंज कर सकते हो? सेटिंग होता है वो नहीं, राइट. सो ठीक है, मैं जान मुझे डाला यहाँ पे. सो अगेन सम एग्जांपल्स कि कौन सा चीज़ कहाँ पे होना चाहिए, राइट. अभी सबसे पहला प्रोजेक्ट खुल के ना मालूम पड़ जाना चाहिए कि किधर क्या. जो मीत का प्रोजेक्ट मेरे को बहुत कंफ्यूज कर दिया कि आई एम सीइंग एनीथिंग एनीवेयर, राइट. इफ आई ओपन अप सेटिंग्स आई एक्सपेक्ट टू सी ओनली मेंबर्स कंसर्न विद सेटिंग्स एंड नथिंग एल्स, राइट. सो ये क्या करता है, फटाक से कुछ देखना या फिर कुछ दूसरे के प्रोजेक्ट में किधर कुछ चेंजेस करना. सो यू नो एग्जैक्टली वेयर टू गो, राइट. जिस क्लास का लिस्ट देने कितने क्लासेस के लिस्ट है, इसमें से कौन सा नेम सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रहता है. लेट्स से कैरेक्टर का अटैक चेंज करना, इज देयर अ स्क्रिप्ट और लेस प्लेयर या प्लेयर अटैक या प्लेयर एक्शन, राइट. अभी दो स्क्रिप्ट हो गए, प्लेयर मूवमेंट, प्लेयर एनिमेशन, प्लेयर एक्शन. सो मैं ऑफकोर्स एनिमेशन और मूवमेंट पर नहीं लिखने वाला, सबसे पहले प्लेयर एक्शन पे देखिएगा मैं, वहाँ पे मेरे को उसका अटैक का कोड मिलेगा, देन आई कैन मॉडिफाई इट, राइट. अभी तूने अटैक का कोड प्लेयर मूवमेंट पे लिखा है तो कितना टाइम जाएगा ढूंढने को, वापस उसको हर बार तेरे को याद करने का, हाँ ठीक है मूवमेंट पे था, वो मूवमेंट पे था. उसको माइग्रेट करने के लिए तुम लोगों को कितना कुछ ब्रेक करना पड़ेगा, कितना कितना रेफरेंसेस लेके बैठा. सो ठीक है, दैट्स बैड. सो फॉर नाउ वी जस्ट हैव वॉल्यूम एंड ऑल्सो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिएट एसेट मेन्यू, राइट. सो ठीक है. अच्छा है उसका प्रोजेक्ट है, राइट. सो मैं यहाँ पे एक सेटिंग्स का प्रीसेट बना के रखता हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग्स, राइट. दिस गोइंग टू स्टोर मेरा वॉल्यूम एंड ऑल्सो वॉल्यूम शुड बी विद इन अ रेंज ऑफ 0 to 1, राइट. ठीक है. अभी इसके बाद और कुछ नहीं बना ना उसका, हाँ लेता हूँ थोड़ा टाइम में, राइट. इसके बाद वी ऑल्सो वांट डिफ़िकल्टी इज और कैन बी अ पार्ट ऑफ सेटिंग्स, राइट. सेंस बना था, राइट. सेटिंग्स के अंदर डिफ़िकल्टी वी कैन सेट. अभी सेटिंग के अंदर भी सेग्रीगेशन होता है अलग अलग, गेम सेटिंग्स, वीडियो सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स, बट यू कैन सी इतना बड़ा ट्रिपल ए गेम है, अपने को इतना ज़रूरत नहीं है, राइट. अभी दो ही चीज़ चाहिए, बायो सेग्रीगेट क्यों करना, तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे चल जाएगा, राइट. सो विल जस्ट प्रोवाइड रेंज 1F to 3F, right. Public int difficulty या फिर बेटर येट इंटीजर के बदले
थोड़ा सा अच्छा कर देगा, राइट. आई जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट स्क्रिप्ट. डिफिकल्टी इनम, या फिर आई विल क्रिएट वन मोर फोल्डर इनम्स एंड यहाँ पे इसको बोलूँगा डिफ़िकल्टी, राइट. इधर कुछ काम नहीं, इधर बस अपने को एक पब्लिक इनम ईजी, मीडियम एज वेल एज हार्ड. सो अभी इसका फ़ायदा क्या, फ्यूचर में तुम लोगों को कुछ ऐड करना नंबर. इंटीजर में नुकसान क्या होता है, लेट्स से तुमने डिफ़िकल्टी 2 रखा, बट अभी तुम लोग को वेरी इजी निकालने का, तो 0 वेरी इजी हो जाएगा, 2 मतलब फिर इजी हो गया, तो जो भी मीडियम हो गया हार्ड के बदले, वॉट एवर इट इज़. सो सब चीज़ें चेंज होती है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में किधर भी कुछ भी ऐड करो, इट्स डन, एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल. ऑलराइट, सो ठीक है. आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस एंड अगेन मेरे को रेंज लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, सो आई जस्ट यूज डिफ़िकल्टी. उससे बेटर इधर ही इनम बना देते. नो, सेटिंग्स के अंदर इनम बनाना काइंड ऑफ, जी, राइट. ऑल्सो इट्स बेटर टू नेम एवरीथिंग अंडर अ नेम स्पेस. Abhi, this is the name that Meet has given to this project, so I'm going to respect that name. Okay, without any second thoughts, definitely for sure. ठीक है, और ये पार्ट भी यहाँ पे आएगा. ऑलराइट, अभी के लिए हम लोग सब कुछ एक ही नेम स्पेस डाल देंगे, विल सेपरेट नेम स्पेसेस लेटर, राइट. सो यू कैन सी अभी स्ट्रक्चर कितना क्लीन है सब जगह पे, वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ वेयर, राइट. अपना डिफ़िकल्टी में भी अपने को दिख के आ रहा है कि वी कैन सेट द डिफ़िकल्टी एंड वी कैन सेट द वॉल्यूम वैल्यू, राइट. नाउ अभी आई गेस मेरे को उसका यूआई ऑन कर लेना चाहिए पूरा का पूरा, कि वापस बनाने बैठूँ मैं यूआई. आई गेस बनाने से बेटर रहेगा, ताकि आई कैन ऑल्सो शो केस कि यूआई किस तरीके से प्रॉपरली बना सकते हैं हम लोग. उसके पहले आई थिंक मेरे को एक मैंडेटरी ब्रेक लेना पड़ेगा. सो मैं बार बार स्क्रीन से इधर उधर से आने वाला, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स बोल के. सो ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़. ओके, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स. आई विल रियली बी बैक इन 5 मिनट्स. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait.
know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey,
Thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. ओ माय गॉड, आवाज़ कहाँ से आ रहा है? मैं जानबूझ के माइक ऑन किया उसके पीछे कंफ्यूज करने के लिए लोगों को, बट ठीक है. माय अटेम्प्ट्स आर पैथेटिक. ए वेट, इसका बैकग्राउंड कहाँ गया? इज इट जस्ट बैकग्राउंड ऑफ करके रखा है सर. नहीं उसका यूआई बैकग्राउंड नॉर्मल स्पेस मतलब बैकग्राउंड इसका. हाँ देखो ऐसा आप अभी टेक्स्ट में जो भी है वो उस पे हो. यूआई पे हो आप, कैनवास पे हो आप, उसका पे मेन सीन पे देखो. ओ बाप रे, ये तो नेक्स्ट लेवल है. क्रिएटिविटी लेवल 1000 भाई. ठीक है, इधर मैं क्या कर रहा था? इधर मैं यूआई बना देता. मैंने खाली डिफ़िकल्टी और ये सेटिंग्स वगैरह जो भी है बना के रखा हुआ है. कुल. सो इसका बैकग्राउंड यूं करता हूँ. इधर से बैकग्राउंड किधर है? बैकग्राउंड मेश है. व्हाट? डिफॉल्ट में ओके, इसका बैकग्राउंड इज अ मेश. इंटरेस्टिंग. तो ठीक है, विल इग्नोर द बैकग्राउंड. यूआई स्पेस में काम कर रहे हैं अपने को ऐसे भी. ठीक है, विल सेट 16:9 and we'll create a UI and we'll name it UI. I mean we'll create a canvas and we'll name it UI. Yeah. So इसके अंदर we'll say to create an image that is full rect. इसके लिए we'll also go to scene so we can see the anchor points. Alright. और इसका कलर देंगे ग्रे, जो मैं दूसरे मॉनिटर पे से उठा रहा हूँ. राइट, मैं तो ब्लैक ही दे देता बेस्ट. ठीक है, सॉरी भाई सॉरी. अभी मैं देखता हूँ कि इसने यूआई में और क्या क्या ऐड किया हुआ है. सबसे पहले इसने एक बीच में टाइटल टेक्स्ट दिया अपना. राइट, सो दिस इज व्हाट विल नेम एज बैकग्राउंड. यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ ऐड करना है तो जस्ट ड्रैग इट टू द स्प्राइट्स, इट्स गोइंग टू वर्क. राइट, बैकग्राउंड के साथ साथ उसके साथ वी वांट द टाइटल. राइट, नाउ टाइटल कैन ऑल्सो बी फुल रेक्ट फॉर नाउ एंड टाइटल इज गोइंग टू कंटेन. ये क्यों आ गया मेरे पे? अच्छा, वो ये पहली बार देखा मैंने वो चीज़. आई मीन वो राइट क्लिक में जो भी है क्रिएट ऐड न्यू ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पे एआई का आई गेस नए अपडेट में आया है कि मैंने कुछ प्लगइन ऐड कर दिया गलती से, पता नहीं. ठीक है, एंड दिस टेक्स्टमैक्स प्रो इज ऑल्सो गोइंग टू बी फुल रेक्ट ऑन टू इट्स पेरेंट. ओके, एंड ये होगा सेंटर अलाइंड विथ ऑटो साइज. राइट, एंड इसको हम लोग कलर देंगे एक्चुअली येलो. राइट, ठीक है, इसको नाम देंगे. राइट, ठीक है.
कुल एंड हाँ इसका टाइटल का रेक्ट अभी निकालता सेट करने का टाइम आ गया. सो विल से 0.4 बराबर. इसको किधर ऊपर रखते हैं 0.8 एंड 0.6 के आसपास. अगर दिस इज वेरी कीप इट. आई गेस दैट्स फाइन. इसके बाद टाइटल के बाद वी वांट ऑप्शंस, डिफिकल्टी ऑप्शंस, दैट इज इजी मीडियम स्टार्ट इजी मीडियम हार्ड का. इससे 3 अलग अलग बटन बना है. श्योर विल कीप इट दैट वे. ऑलराइट, द आइडिया विल बी द सेम. सो ठीक है, विल कीप अ बटन ग्रुप बटन्स, राइट. एंड ये शुरू होएगा जस्ट यहाँ से फ्रॉम वेयर द टाइटल एंडेड एंड वहाँ से लेके ये भी सेम हाइट कवर करेगा. राइट. ठीक. इसके अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 empty game objects and I am going to call this easy and hard, जो भी है. एक्चुअली इनको बाद में बनाना चाहिए. Now why do I need an empty game object and why not directly button? It's because everything in UI must be a container. The rule that I have when creating UI is हम लोग यहाँ से जो भी एलिमेंट उठाते हैं इसका नाम कभी चेंज नहीं करना चाहिए. To create a UI as readable as ये names कभी चेंज नहीं करने पड़े. So what do we have? ये UI जिसके पास बैकग्राउंड है, टाइटल है, टाइटल के अंदर टेक्स्ट है, राइट. इफ टाइटल के अंदर वी हैड एन इमेज देन इमेज आता, देन इट वुड बी ईजियर टू रीड कि हाँ ये टाइटल इमेज है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ये इमेज है टेक्स्ट है, समझने के लिए, राइट. नाउ वी हैव बोथ टेक्स्ट एज वेल एज इमेज, राइट. उसके अंदर वी हैव बटन जिसके अंदर है इजी, इजी के अंदर एक बटन UI, राइट. सो विल जस्ट से स्टार्ट ऑप्शंस instead because buttons के अंदर button sounds bad, right. You must create a UI in such a hierarchy that it forms a sentence. Okay, button would be present in an easy start option along with title and background under UI, right. Sentence proper बना रहा है, descriptive बना रहा है. That is how you create UI in Unity, or that is how I prefer to create UI in Unity. राइट. सो ठीक है. सो आई हैव दिस बटन जिसके अंदर है टेक्स्ट मैश प्रो एंड आई वांट दिस बटन टू बी फुल रेक्ट, राइट. ठीक है. आई ऑल्सो have this have a horizontal layout group, not easy, sorry. I'll also have start options have a horizontal layout group, right. So we get all this, right. अभी बटन के अंदर I'll just name this as easy. I'll also get rid of the normal image. I don't want any graphic interactions or transitions, and then I'll duplicate this. Easy, medium and hard. और इसके अंदर के जो भी बटन टेक्स्ट है उनको भी हमने को चेंज करना पड़ेगा. ऑलराइट, हो गया. नाउ टू ऐड सम ब्लीडिंग एज पिक्सल्स बिटवीन देम, दैट इज लेट्स से 10 फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज राइट, राइट. सो ये दिस. अभी इसका ओरिजिनल आइडिया में द बटन्स वेर अ बिट स्मॉलर, राइट. सो हम लोग उसको भी कर सकते हैं सिंस हम लोग ने सब कुछ एक स्टार्ट ऑप्शन का पार्ट बनाया हुआ है, राइट. विल जस्ट से कि दिस शुड इंस्टेड बी कवरिंग a smaller area, right. And start options, let's say it should also be covering 0.2, 0.8. It should be ignoring some part of the screen as well, right. So I guess this is much better now, right. इसके बाद UI के अंदर we want one final thing, that is
वॉल्यूम। राइट, सिंस अपने पास सेटिंग्स का एक अलग से सेक्शन नहीं है, सिंस वॉल्यूम करके एक ही चीज़ है यहाँ पे, सो आई जस्ट सेट दैट। राइट, सो ठीक है, वॉल्यूम कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। राइट, cool. We'll just say that this should also come down to 4 and 8 as well. Now in दोनों का rect is exactly the same. Alright, fine, not a bad thing. Which means क्या वो दोनों एक और parent game object का part बन सकता? Are both related? Yes, they are both part of the settings, right? But this, in this case, that's not a setting, it's a start option. Settings के लिए UI पे there is technically only volume, right? So ठीक है. Now also one more thing I just realized कि sure difficulty के अंदर भी है settings, but हम लोगों ने कभी सेट नहीं किया कि प्ले करने में क्या आना चाहिए. अभी डिफ़िकल्टी सेट किया, इट मीन्स whenever I press play ये difficulty पे चालू होना चाहिए, but we don't have such a button. What we have is 3 different buttons for whenever you want to start. So basically this entire variable renders useless, right? It would be valid when मेरे पास एक play button होता है, difficulty में setting में अलग से change कर पाता एक drop down में, right? But यहाँ पे already 3 अलग button है, so again that is not associated to settings now. लेकिन इनम रखेगी, इनम विल बी यूजफुल, इनम यूजफुल है. सो ठीक है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम का स्लाइडर ऐड कर देता हूँ. राइट, अभी के लिए स्लाइडर ऐड कर दिया मैंने. राइट, कुल. नाउ ऑल्सो वॉल्यूम का जो मेरा रेक्ट है, इसको थोड़ा और नीचे लेके आऊँगा मैं. Alright, so there is a space between everything. Correct. इस स्लाइडर को बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए. राइट, वी हैव फिल एंड फिल एरिया, जिसको I'd like to remove any bleeding left. Also I'd like to remove fill and I'll change it to the color that Meet had selected. राइट, यहाँ पे भी 10 नहीं आएगा वैल्यू. एंड डू वी रिक्वायर हैंडल? यस, राइट, हैंडल का ज़रूरत है. सो आई अगेन रिमूव ब्लीडिंग फ्रॉम हैंडल, बट रादर इसका विथ मेरे को सेट करना पड़ेगा मैन्युअली एवरी टाइम. सो ठीक है, अभी के लिए विल जस्ट कीप 40 आई गेस. राइट, सो व्हाट वी हैव इज दिस थिंग राइट हियर. Right, now to align everything with our start options, इस स्लाइडर को भी मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर 10 का एक्स्ट्रा ब्लीडिंग दूंगा. राइट, कुल. ऑल्सो मेरे को हैंडल इतना पसंद नहीं आ रहा, तो मैं निकाल दूंगा अभी के लिए उसको. राइट, इंस्टेड मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम के अंदर दैट इज स्लाइडर के साथ आई एम, एक मिनट, ये पूरा जा रहा, नप पूरा नहीं जा रहा. 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड ठीक है, अभी ये पूरा जा रहा. अभी इसके अंदर I'd like to keep one more thing, that is on top of the slider a text. Alright, ठीक है. अभी text will be of course rendered black. ये full rect होगा इस space में and of course centered होगा. Alright, now this is going to depict the volume का amount, okay, as 0 to 100. Right, or we can name it 0%. I guess, I don't know, परसेंट लिखना नहीं लिखना है, तुम लोग का प्रेफरेंस है. राइट, सो ठीक है.
अभी एक और चीज़, हम लोगों ने जितने बैकग्राउंड्स वगैरह बनाए वहाँ पे there are few options such as recast, target and maskable added. Now only use this when you actually want your mouse cursor to detect this images. Alright, so titles वगैरह में मेरे को नहीं चाहिए, so I'm going to get rid of all that. Alright. ठीक है, easy, medium, hard पे चाहिए surely. Right. That is, we do require recast target but we don't require maskable. अभी recast target क्या करता है, that also I'll try to showcase. Right. For now we are able to click this button. How do you know? It's because if मैं यहाँ पे इसका interactability color tint पे रखता हूँ, right, and over पे कुछ और color रखता हूँ मैं, now I'm able to go here and I'm able to hover over things. But as soon as recast target बंद होता है, alright, ये प्ले मोड पे बंद करना पड़ेगा, प्ले मोड के बाहर जाके बंद करना पड़ेगा. ओके, इट इज स्टिल वर्किंग बिकॉज नाउ इसका टेक्स्ट रिकास्ट कर रहा. राइट, दैट इज, दिस टेक्स्ट इज नाउ रिकास्टिंग, क्योंकि यहाँ पे भी रिकास्ट टारगेट करके होता. राइट, सो इफ मैंने दोनों भी बंद कर लिया, आई गेस या आई होप अभी दिखेगा कि दिस वोंट बी एबल टू डिटेक्ट माउस कर्सर ओवर द GUI अनलेस मैं इसको स्पेसिफिकली ऑन करता हूँ. ओके, इसको बंद कर दिया, नो क्लिकिंग. राइट, ओके, सो दैट्स द प्रूफ एज वेल. कूल. नाउ यहाँ पे अपने को रिकास्ट टारगेट चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट पे नहीं चाहिए, सिर्फ बटन पे चाहिए. वॉल्यूम स्लाइडर पे ऑल्सो आई डोंट थिंक वी रिक्वायर एनी ट्रांजिशन ग्राफिक. इसके टेक्स्ट पे भी वी डोंट रिक्वायर दिस ओवरकिल. राइट, उसको छोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू लीव व्हाट यू डोंट वांट अनटिक्ड. राइट, इवन स्लाइडर का जो बैकग्राउंड है वहाँ पे तो ऑफकोर्स चाहिए अपने को, क्योंकि उसको ऊपर ही टारगेट होने वाला है. फिल पे चाहिए अपने को. राइट, ये टेक्स्ट पे तो ऑलरेडी बंद कर दिया हम लोगों ने, सो फाइन, बाकी सब बराबर है. राइट, कूल. सो नाउ वी जस्ट वांट टू बाइंड कि ये जो वैल्यू है इसका, दिस इज गोइंग टू चेंज ऑन वैल्यू चेंज ऑफ द स्लाइडर. राइट, सो ठीक है, आई गेस मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स बना के रखा हुआ है वॉल्यूम के लिए. राइट, नाउ वी ऑल्सो नीड टू चेक कि ये वॉल्यूम स्लाइडर कौन सा टाइप का वेरिएबल ले रहा है. सिंगल, सिंगल इज अ फ्लोट. राइट, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक वॉइड ऑन वॉल्यूम change. For now I will have to rename this function. Alright, ठीक है. इसका वैल्यू जब फ्लोट में गया, देन आई ऑल्सो वांट कि जो हम लोगों ने टेक्स्ट बनाया था वो उस पर अपडेट हो. बट वो चीज़ करने के लिए वी डू रिक्वायर अ रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट. So the thing is, this function shouldn't or cannot exist in settings. It should have its own script because we are now referencing to another text. Right? अभी मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे. I can definitely try कि स्लाइडर का ऑन वैल्यू चेंज में मैं TMP टेक्स्ट को इंपोर्ट करके देखता हूँ. And I'll just say dynamic float font size mapping. Nope, ये तो उसका साइजिंग चेंज करेगा वगैरह, स्पेसिंग चेंज करेगा. वी डोंट वांट दैट. व्हाट आई वांट इज इसके अंदर का कंटेंट वो आ जाना चाहिए. नाउ वी आल्सो वांट टू राइट एन एक्स्ट्रा लॉजिक कि अपना स्लाइडर तो अभी 0 to 1 पे जा रहा है. राइट, सो वी वांट टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 100. राइट, एंड उसका डेसिमल निकालना एंड फिर उसको स्ट्रिंग पे डालना. करेक्ट. सो उस चीज़ के लिए विल जस्ट क्रिएट येट अनदर स्क्रिप्ट. What would
we call this script UI manager. Right, now this is, I guess, the final manager that we will be having in this game. Right, ठीक है. अभी this is going to reference to private tmp text. कौन सा था? Volume text. Okay, cool. And I'm going to create a function public void update volume text, and that is volume text dot text will be equals to string dot format. राइट, अभी अपने को कौन सा वैल्यू चाहिए यहाँ पे? जो वैल्यू मैं डायनामिक फ्लोट में पास करूँगा, दैट इज सिंगल. फ्लोट इज सिंगल. करेक्ट, ठीक है. वी वांट दिस, एंड देन वी आल्सो वांट कि यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएगा एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पे जाएगा. बट ऑल्सो वी कैन गेट रिड ऑफ दैट एंड वी कैन जस्ट यूज इंटरपोलेशन, दैट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन. Okay, we can just say value as 0 0 by, okay, value into 100 था. राइट, वैल्यू इंटू 100 अपने को कैसे चाहिए था? 0.0% या फिर पॉइंट में चाहिए था एक? हाँ, ये एक सिंगल पॉइंट चाहिए था कि नहीं चाहिए था पॉइंट? लगता है ना सर 100 नहीं, चल नहीं चाहिए पॉइंट छोड़. राइट, सो ठीक है, वी हैव दिस. परसेंटेज चाहिए, देन वी कैन राइट परसेंटेज राइट हियर, वरना ज़रूरत नहीं है. राइट, सो ठीक है, कुल, डन. राइट, सो इफ़ वी गो राइट हियर, जहाँ पे मैं अपना UI मैनेजर रखूँगा, या फिर बेटर येट मैनेजर सारे एक ही गेम ऑब्जेक्ट पर रहने चाहिए. एंड नाउ आई कैन रिफर टू दिस tmp text. करेक्ट, एंड मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा स्लाइडर के अंदर कि रिफ़र टू दिस मैनेजर एंड गो कि इसका वॉल्यूम टेक्स्ट अपडेट हो. लेकिन वी आर गोइंग टू बाइंड डायनामिक, तो हम लोग को वैल्यू यहाँ पे नहीं डालेगा, वैल्यू जो भी पैरामीटर में पास है वो यही करेगा. राइट, सो इफ वी प्रेस प्ले नाउ, राइट, अभी मेरे को इसको देख के इनविंसिबल का याद आ रहा है, ब्लू वाइट एंड येलो. ठीक है, वेरी रैंडम थॉट, बट ठीक है. ठीक है, अभी द थिंग इज, स्टार्टिंग में लेट्स से अगर मैंने इसका फिल रखा 25, अब 0.25, एंड इफ आई प्रेस प्ले, it is still going to be 0. So we also need to update कि starting में जो इसको value मिला वो reflect करना चाहिए. Right, that is once on start it should also update this value with something. Right, अभी यहाँ पे मेरे को क्या स्लाइडर का रेफरेंस लेना पड़ेगा? प्रॉबेबली यहाँ पे मैं वैल्यू डालूँगा क्या? स्लाइडर का वैल्यू जो रहेगा. राइट, नहीं तो मेरे को एक ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि एवरी टाइम मैं बिगिन द गेम, अगर ये 25 में, मेरे को इधर भी जाके 25 लिखना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट व्हाट यू वांट. राइट, सो अभी अपने को चाहिए कि ये स्लाइडर का जो वैल्यू है वो वहाँ पे आना चाहिए UI के अंदर. राइट, सो वी कैन अपडेट द वॉल्यूम टेक्स्ट एट start, but we don't want that. So what we can do instead is we can create yet another function public void without referencing stuff, is that initialize volume text. okay, यहाँ पे आएगा slider, that is from unity engine.ui and slider. Right,
and basically volume.text will still be the same, but slider.volume से आएगा वो. It means basically it's going to call this function with slider.value, right? अभी when do we call initialize volume text? I prefer कि we should be calling this on public unity event on begin, right? Now this is purely to get rid of referencing stuff, right? इसको मैं start में बोलूँगा on begin dot invoke, right? ठीक है, cool, simple. We have update जो रन टाइम पे अपडेट करता है उसका, एंड इनिशियलाइज जो स्टार्ट में इनिशियलाइज होता है, राइट? सो आई गो टू दिस मैनेजर, बोलूँगा ऑन बिगिन initialize volume slider text with this slider. Okay, cool. So now ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर हो गया, बट दिस स्टिल पोजेस नो रिलेशनशिप विद दिस सेटिंग्स का वॉल्यूम व्हाट्सएवर. सर ठीक है, अभी के लिए इसका सेटअप छोटा सा ही UI का, लेकिन एक बार काम हो गया, इतना सिंपल हो गया तुम लोग को, यू वॉन्ट इवन नोटिस इट. ठीक है, अभी 25 है, आई प्रेस प्ले, इट इज़ गोइंग टू बी 25 नाउ, राइट? अभी बस एक और छोटा सा चीज़ करना है, देन वी कैन आई गेस वर्क ऑन द गेम प्ले, right? That is, now I want to get this into picture. अभी भी मेरे को एक referencing लग रहा है इसका खुद का, right? The referencing part is itself. This also can be avoided, right? अगर मैं इसको दूसरे सीन पे जाके पेस्ट करता हूँ, ये इवेंट निकल जाएगा, ये this is fine, ये निकलेगा, it's fine. But I don't want the event to leave itself. So in that case, what I'm going to do is, ये जो initialize slider का जो भी चीज़ है, it should be a part of the volume. It should be a part, sorry, not part of the volume, it should be part of the settings set by. ठीक है? So UI manager में there will only be a reference to settings का volume, and that is what will be updated to slider. For that line by line I mean क्या बोलता है, step by step जाता है, and यहाँ पे जब हम लोग volume text अपडेट कर रहे हैं, we also want to update the settings के अंदर जो volume रखा हुआ है, right? That is, किधर गया? अभी setting के अंदर मैंने जो volume रखा है, that is a public float volume. इसको सेट करने के लिए हम लोग को इधर अलग से अपडेट फंक्शन लगेगा, इफ़ यू आस्क, राइट? क्योंकि इसका स्लाइडर में हम लोग जाते हैं, एंड इफ वी आर टू, ये है, इसका आइकन क्यों नहीं है? वियर्ड. ठीक है, ओके. सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, वी डोंट सी एनीथिंग. सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको अगर अपडेट करने का, देन वी कैन ऑल्सो मेक इट गेट सेट. नो, प्राइवेट सेट नहीं, कोई भी इसको सेट कर सकता है, बट यहाँ पे अपने को फील्ड लगाना. सो व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट इज, वी कैन देन अपडेट दैट डायनामिकली. okay, it's not only functions that can be updated dynamically but also properties, right? Then वहाँ से we get rid of this for now, या फिर इसको नीचे लाते हैं प्रायोरिटी वाइज.
राइट. सो इफ़ यू सी कि मैं यहाँ पर अगर स्लाइडर का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मेरे सेटिंग्स पे वो शो नहीं हुआ. उप्स. हाँ, प्रॉपर्टी है तो सीरियलाइज फील्ड एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा. राइट. सो इफ आई प्रेस पे नाउ, राइट, वो चेंज हो रहा है एंड इट्स गोइंग टू मेंटेन इट्स पोजीशन. नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज, जो चीज़ हम लोगों ने यूआई मैनेजर के साथ करा इज इनिशियलाइजिंग वॉल्यूम. करेक्ट. We also want to create a setting that initializes the slider, that is using unity engine dot UI, right, that is slider dot value will be equals to volume. Okay. Initialize volume value. Alright. ठीक है. This is a setting function. So अभी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जाने का मैनेजर पे on begin. क्यों? ओह, बग हो गया. तो गायब करो इंस्पेक्टर. बग हो गया था. नीड कैश. ठीक है. सो यहाँ पे वी विल बी इनिशियलाइजिंग अ स्लाइडर एंड दैट स्लाइडर इज गोइंग टू बी वॉल्यूम. राइट. ठीक है. नाउ दैट दिस स्लाइडर इज इनिशियलाइज्ड, we can then have the UI manager update the text from this settings to here. So अभी अपने को इधर किसी भी स्लाइडर का ज़रूरत नहीं है. What we just require is one reference to settings, and that is serialized field private settings. Right. So we have this using cursor mania. Okay, cool. And we'll just say start में volume text will also be equals to update volume text with settings dot volume. Oops. Okay. With value as that. Okay. वरना वैल्यू नहीं लिखना तो फर्क नहीं पड़ता. Cool. अच्छा ही दिख रहा. Right. Now instead of doing this all the time, what we want to do is वापस. हाँ, 2 मिनट ले दो. ओके. अभी ये सिर्फ स्टार्ट में एक बार होने वाला. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. वी वांट कि एवरी ऑन एनेबल अगर सीन वगैरह कुछ ऐड करते नया, देन अपने को कोड चेंज करने का ज़रूरत नहीं करना पड़े. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसको ऑन एनेबल पे डाल दूँगा. अभी ऑन एनेबल पे अगर मैं ऑन बिगिन पे इसको बाइंड करता हूँ, राइट, लेट्स से अगर मैं डालता हूँ ऑन बिगिन डॉट ऐड लिसनर, यहाँ पे लोकल फंक्शन ही बनाना पड़ेगा मेरे को. इट्स दैट it's going to call update volume text with settings dot value. Settings dot volume. So every time enable पे काम करेगा, बट ये अगेन लोकल फंक्शन रहेगा. इसका अलग फंक्शन बनाना रिमूव के लिए तो वो कर सकता है. बाकी दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट सिंस इसके गेम में अलग सीन का इंटेंशन भी नहीं है, सो इसको स्टार्ट में रखेंगे. अभी के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर फ्यूचर में इफ़ यू वांट टू ऐड सीन्स, देन ये इस कोड को चेंज करना पड़ेगा. राइट. बिकॉज ये एक ही बार रन होने वाला. अगर वैलिडेट में अगर सर हम लोग अगर
ऑफ कोर्स सीन वापस आएगा तो स्टार्ट भी वापस होता है. इट्स जस्ट दैट कि गेम ऑब्जेक्ट एनेबल होकर डिसेबल होता है, जो भी वट एवर. आई डोंट. हाँ ठीक है, बराबर है. ऑलराइट. सो अभी अपना बाइंडिंग कैसा है ये देख लेता है. आवर सेटिंग्स वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर नाउ, राइट. यहाँ पे अपन एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपना लगा देगा, विच इज़ वॉट यू वांट. And also one more thing, कि default settings should even be on top of the event, right. बाकी नीचे सब मिकी माउस चीज़ आएगी. बहुत कंजेस्टेड कर दिया है तो नीचे वालों ने अभी. बहुत नज़दीक है दोनों भी. ठीक है, ठीक है. सो इफ़ यू सी द रेफरेंसेस अपने स्लाइडर पे, वी आर जस्ट सेटिंग द वॉल्यूम. एंड अपना UI मैनेजर पे वी आर डूइंग द अपडेटिंग टेक्स्ट, राइट. बेसिकली अभी हायरार्की कैसा हो रहा है कि देयर इज अ स्लाइडर एंड देयर इज द टेक्स्ट एट इनिशियलाइज, राइट. एंड देयर इज सेटिंग्स, राइट. पहले क्या था, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करता था. अभी क्या होता है, ये इससे कम्युनिकेट करता है, ये इससे कम्युनिकेट करता है, राइट. और अगर इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट सेटिंग्स दे देता, राइट. नाउ दिस कनेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जो भी कनेक्शन अपना क्लियर कट हो रहा है. सो ठीक है. वन सेकेंड, छोटा सा रिव्यू. अपने सेटिंग से जो वॉल्यूम एक स्टोर कर रहा है एंड उसके पास एक इनिशियलाइज वॉल्यूम का फंक्शन है जो एक स्लाइडर का वैल्यू सेट करता, राइट, टू वॉल्यूम पे. कुल, ठीक. उसके बाद अपने UI मैनेजर में है कि वॉल्यूम का टेक्स्ट जो है इट्स गोइंग टू चेंज ऑन वॉट एवर वैल्यू विल बी पास्ड, राइट. सो ये तो डायनामिक फ्लोट के लिए बना है, लेकिन इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होएगा, अगेन सेटिंग्स के वॉल्यूम से, राइट. सो बेसिकली जो भी चेंजेस हो रहा है सब एक सेटिंग प्रीसेट पे हो रहा है. चेंजेस हो रहा है सेटिंग्स पे, और चेंजेस ले रहे कहाँ से, सेटिंग्स से, राइट. जो भी दे रहे सेटिंग से दे रहे सेटिंग्स पे करता है. दैट इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड स्लाइडर व्हाटसोएवर, राइट. मैनेजर का रिलेशन है खाली जो चीज़ को अपडेट करना उससे, बाकी सब सेटिंग्स हैंडल करेगा, विच इज़ बेटर फॉर नाउ. सो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. यस, ये थोड़ा आई गेस डिफ़िकल्ट रहेगा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इवेंट बाइंडिंग, ऑब्जर्वर एंड ऑल. सो ठीक है, राइट. आल्सो क्या यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं जहाँ पे मैं स्लाइडर का वॉल्यूम चेंज कर सकूँ? वेट, मैंने क्या किया, ठीक, बराबर है जो किया कोड से किया, सही है, सब सही है, राइट. कुल. सो ठीक है, आई गेस वापस से एक और मैंडेटरी ब्रेक ले गए. सो मैं आधा थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया. ओके, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स. Hi, गलत वाला वीडियो प्ले कर दिया गलती से. hi. I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes.
thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly.
I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. हेलो। सो इधर जो दो ढोलू वोलू बैठे थे वो चले गए। आई एम अरुण। सो आई गेस अभी थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ मैं। सो नाउ दैट वी हैव सेट एवरीथिंग, इट्स टाइम टू टेस्ट इट आउट। राइट, देखिए 100 पे 55 पे जाता हूँ। आई क्लोज इट अप, I'll press play again, and you can see it still goes back to 55. Right, I'll switch it to 19. I'll close it up, I'll press play, and it goes back to 15. Right, so again hierarchy जो हो रहा था, again this is the confusing part, इसमें बार बार बता रहा हूँ। Whatever you create is updated onto this scriptable object asset, which has the ability to survive multiple scenes. That is, एक एडिटर मोड से तुम तो प्ले मोड में जा रहे हो, सर्वाइव कर पाता है। दैट इज इट ओनली सर्वाइव्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर एप्लीकेशन सेशन। राइट, जब तक आज सेशन लाइव है एप्लीकेशन का, तब तक वो एग्जिस्ट करेगा। आफ्टर एप्लीकेशन इज एंडेड, इट्स गोइंग टू गो अवे। सो दैट्स वेयर वी गो इनटू the save and load functions to save and load the settings का values onto this class, right, from this class and to this class. So अभी मैं save and load का logic नहीं बना रहा, it's just कि मैंने open करके रखा हुआ है, so in future I can store it right here. Alright, now I guess I need to focus on creating the gameplay scene. Alright, that is इजी, मीडियम एंड हार्ड करके मेरे पास 3 अलग अलग बटन्स हैं, विच मीन्स मेरे को आई डू रिक्वायर कलर टेंट ऑन टू ऑल ऑफ देम, एंड नॉर्मल कलर इज एज गुड एज सिलेक्टेड कलर। ऑलराइट, ठीक है। द हाईलाइटेड कलर कैन बी अ लिटल रेड, राइट।
whereas the pressed color can go extra red. Right, so when we press play, this is what we see. Alright, and also ये जो भी text बना के रखे हैं, this can be full black. Alright, so yeah, we have all this. I guess इसका जो बटन है, इसका मेरे को रेड कलर है. It should be a brighter red, like all the blood in the invincible जो भी है. Right, इसका fade duration I'll increase to 0.2. That is, it takes a little bit of time to go towards that, as you can see. Alright, so ठीक है. I guess this looks great. After this, I want to start off with the gameplay scene. There is nothing here that should be turned on or turned off within the UI. Now let's compare this UI to Meet ka screen. There is a restart, game over text and a pause menu. Alright, yes. We will be creating that later. First of all, let's create the game. Alright. So, game ke andar what do we have? Alright. Let's say we have removed the entirety of UI, which means I can now go to start options and say on all three of these buttons key I want to bind and disable the canvas for now. Right, that is, whenever I press any of these buttons, the canvas will be disabled. I won't be turning off the game objects as well as sub ka on enable and disable call hoega. I'll just be disabling the canvas. Right, that's much easier. Alright, now also I can also create a canvas manager that also turns off graphic recaster along with it, so you know that's more convenient and optimized. So I'll just say canvas manager. Alright, I'm just going to write here serialized field private graphics recaster. Right, ठीक है. That is recaster. Recaster will be set to true or false based on if इसका canvas disable हो रहा है या नहीं हो रहा. Right, so whenever the enability of canvas changes, we change graphic recaster का value, or else I am just realizing कि I don't have a callback for canvas का enabling and disabling. In that case, what the best thing to do would be just to disable it as well manually instead of creating a new script, which I just now realized. Alright, yeah, I am improvising everything as well. Okay, alright, so it turns off the recaster and it turns off the canvas, and also we need to pass a value onto the game manager. Right, now instead of game manager I am going to create a gameplay manager. Do we require a gameplay manager? What would be the purpose of a gameplay manager? To set our scene as per target difficulty. That is, if मैंने easy डाला उसका spawning rate, of course यहाँ पे difficulty के नाम पे खाली spawning rate change हो रहा है. Right, if easy then spawning rate कम होता है, medium spawning rate medium होता है, hard पे spawning rate फटाफट होता है. जो भी है, everything happens too quickly. So
Cool. For now, I guess I should just focus instead on creating the game instead of difficulty. I don't think it's that big of a chapter and बाद में उसको achieve कर सकते हैं. So ठीक है. What's the part about the gameplay? Gameplay में background कैसा? I would want to play this game and see यहाँ पे background कैसा दिखता है मेरे को. Right. Okay, it's literally the same as this. Bye bye. So यहाँ पे थोड़े बहुत objects उड़ के आता है. Now also I am going to do that with a black screen. Right. अभी black screen रिसेट करने के लिए मेरे को अपना कैमरा भी ब्लैक करना पड़ेगा इसका साइड बॉक्स. ओके. नाउ इसके बाद I want all the objects to come up and come down. That is, I want meshes of good and bad objects. So यहाँ पे कोर्स लाइब्रेरी के अंदर आई गेस इसने दिया होगा सोर्स फाइल्स fbx 8 बॉल वगैरह जो भी है. बाप रे. कैन आई जस्ट हैव good object and bad objects. ये क्या है? sm prompt this prompt that. alright. So इसमें से इसने थोड़े बहुत objects ही उठाए हुए जैसे कि I think bomb, barrels, crate and skull. skull कहाँ से लिया? So इस चीज़ को बार बार आगे पीछे नहीं जाने के लिए मैं प्रोजेक्ट विंडो ओपन करके रखता हूँ. आई जस्ट लॉक दिस. राइट. एंड ठीक है, आई गो टू बैड ऑब्जेक्ट द sm_icon skull. ओप्स, यहाँ पे पीछे आने का एबिलिटी नहीं है. प्रीफैब्स गेम ऑब्जेक्ट इस पे क्लिक करता है, इस प्रोजेक्ट विंडो पे जाओ एंड sm_icon skull पे जाओ तुम लोग. ऑलराइट. कूल. सो दिस इज ओके, दिस इज द skull. So we get this, and this, right? SFB access onto अपना प्रोजेक्ट. Right, so we get this. Nice, doesn't look bad. We also want a directional light, that is light, directional light onto our scene. Correct. So that we are able to see things. Alright, now when it is facing the front face, I am still not able to see इसके face पे some light, which means we have to adjust the direction light in a way that अपना skull अपने को दिख गया है. And that is 140 I guess and 30. Alright, ठीक है. So our direction light is proper and the skull is proper. And I'll just name this folder as fbx. Right. अभी इसका materials भी चाहिए होगा अपने को. Right. So we'll go to materials and इसमें से कौन सा होगा? I have no idea. I guess सब एक साथ भर दिया लोग ना. एंड टेक्सचर्स. राइट. थोड़े बहुत टेक्सचर्स देख लेते हैं. यहाँ पे स्कल का रेलेवेंट पार्ट कहाँ पे दिख रहा है मेरे को? नॉट दिस एज वेल. नॉट दिस एज वेल. आई गेस जो भी कलर बॉक्स है यहाँ से होता रहेगा. ठीक है. in that case I am just going to go to this object. इसका मटेरियल लिखता हूँ. मटेरियल इज पॉलीगॉन प्रोटोटाइप एंड
it asks for this. ठीक है, so I'm going to create here material and textures, right? and यहाँ पे जाऊँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट, इसको 2 मिनट के लिए दूसरे मॉनिटर पे लेके जाता हूँ मैं. सो आई विल गेट दिस हियर एंड अगेन उसका मटेरियल भी लेके होगा, दैट इज दिस, राइट. एंड ऑल्सो एफ पी एक्स जो भी बना रहा हूँ मैं, उस पे आई एम गोइंग टू बी एडिंग दिस मटेरियल. एक्चुअली मटेरियल का ज़रूरत भी नहीं है, इफ़ ओनली मैं इसका कलर भी चेंज कर दो, दैट इज़ गोइंग टू वर्क जस्ट फाइन, बिकॉज यहाँ पे कुछ कलर का कुछ है नहीं. सो फिर भी ठीक है, इसका अंदर थोड़ा सा अलग अलग शेड्स वगैरह यूज़ करा है, सो दैट्स फाइन, रख सकता, राइट. नाउ दिस इज़ द स्कल, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अनपैक. सॉरी. एंड इसका प्रीफेस बनाना, दैट आर ऑब्जेक्ट्स, राइट. एक्चुअली इसका नाम होता है प्रीफैब्स. प्रीफैब के अंदर वी हैव स्कल. कुल स्कल के साथ साथ नाउ वी वांट समथिंग एल्स. आई एम गोइंग टू अनपैक दिस अगेन. यहाँ पे मेश अलग चेंज करूँगा, आई एम बिल चेंजिंग टू बैरल, एंड मेरे को बैरल का आइटम मिल गया. नाउ आई विल नेम दिस थिंग एज बैरल. इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा, इसका मेश चेंज करूँगा टू बॉम्ब, एंड ऑटोमेटिकली गेट दिस बॉम्ब. इसका नाम चेंज करूँगा बॉम्ब, एंड आई गेट बॉम्ब का प्रीफैब. अगर मैं इसको अनपैक करके वापस डालता हूँ, राइट. एंड फाइनली आई देन हैव, ओके, हाँ, यहाँ पे ये येलो कलर का आ गया, ठीक है. कुल, व्हाई नॉट. ओके, अनपैक एंड क्रिएट, राइट. अब ये सारे जो मैशेस था, इन पर मैं लाइट प्रोब्स वगैरह ऑफ कर दूँगा. आई डोंट वांट इट टू रिसीव, ओके, दे कैन रिसीव शैडोज, बट इनका वेक्टर मोशन विल बी नो, राइट. ठीक है, सारे का. So we have all this, right. Now we just want कि they are then thrown in an empty canvas, right. अभी मीत ने वो चीज़ कैसे किया है, मीत ने इंस्टेंशिएशन करके किया हुआ है, राइट. बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है, दैट इज उसके गेम मैनेजर में अगर हम लोग जाते हैं, वी सी दिस पॉइंट टारगेट. Every time coroutine पे is instantiating. Now I can do this, or I think we can do this in a better way. Alright. Now spawning things at a predicted rate is not okay. Right. We want to throw things at an unpredicted time. Like if I'm expecting कि हाँ चलो 2 सेकंड होगा, मेरे को एक और ऑब्जेक्ट आने वाला है, 2 सेकंड होगा, एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, that is very predictable and it can lead to fatigue gameplay or gameplay fatigue जो भी है. So we want to keep the player weighted. He doesn't know when the object is going to come, so that he is interested in on its screen and relying purely on its reflexes. Now that is also of course only going to engage the player if a game is actually engaging enough. So cool, but still randomly spawning things sounds like better idea. मैंने बॉम्ब पे क्रिएट डाल दिया. ओके, ओवरराइड भाई, ठीक है, हो गया. कुल, ठीक है. नाउ आई हैव target FPS से 360 एंड अपना स्पॉनर कौन रहेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट स्पॉनर.
let's say this. Alright, let's say this is going to be other object spawner. Now to spawn things we require a script, that is object spawner, right, which will be attached right here. Right, now I am going to say two public float, that is min and max timer, that is header timer, right. इसके बाद I want late update, okay, for no particular reason. I just want कि serialized field read, अच्छा यहाँ पे utilities नहीं डाला मैंने, so ठीक है, private float elapsed, okay, elapsed plus equals time dot delta time, right. And also one more thing, कि if elapsed is greater than if it is greater than timer, right, in that case I am just going to say elapsed will be equals to 0 and timer will be equals to random dot range min max, right. So I'm just going to keep on incrementing this every second until it reaches the end of timer, and if it does, I'm just going to make this bit 0 and increase the timer, right. That is only if elapsed is greater than or equals to timer. अभी this is never going to start because starting में timer के पास value नहीं, so elapsed and timer are equal at beginning for the first time, so this is not going to work at start, but as soon as timer पे कोई और value जाता है it's going to work perfectly. So ठीक है, right, that is greater than equal to, alright, so cool. And for this, whenever this thing happens, we want to spawn stuff, that is private void spawn, right. अभी spawn के time of course we can also keep on instantiating different things, but ठीक है, उसके पहले I'd like to do something differently. ये जो on begin जो event है, this I just realized should be onto the game manager. Okay. Since यहाँ पे एक ही सीन रहने वाला, एक मिनट, okay. Now this might look like an overkill. Okay, we have game manager and we have session manager. What is the game manager for? The game manager is an application manager in disguise. Alright. So ठीक है,
and also the game manager should also be part of don't destroy unload a game object. Alright, which means game manager should be on its own unique script if ever required. Cool. So I'm just going to write game manager and then the normal manager, that is UI manager for now. So copy component, remove component, paste component as new. Right, so we have two different things. And now on session manager is what we keep on begin. Alright, UI manager पे on begin doesn't make much sense. या फिर चलेगा एक ही सीन है, then in that case it's fine, right? Yes, maybe I'm overthinking. I'm definitely overthinking. I'll just post this here for now. Fuck it. Okay. We had slider initialize, that right? So we just have again ऑलराइट. सो यहाँ पे इतना सा चीज़ आएगा. नेम स्पेस आएगा कर्सर मीना के अंदर ईश्वर, उसी का तो स्क्रिप्ट था. राइट, एंड देन सेशन मैनेजर यूज दिस. गेम मैनेजर के अंदर भी ऑन बिगिन सेटिंग्स वगैरह डिफिकल्टी श्योर यूआई मैनेजर ऑब्जेक्ट स्पॉनर भी आएगा. देन कर्सर मीना. कुल. सो अपना स्पॉन का लॉजिक या फिर जो भी फंक्शन है अपने पास. अभी स्पॉन के अंदर आल्सो नीड टू फर्स्ट सेट की मिनिमम वैल्यू क्या रहना चाहिए. मिनिमम वैल्यू लेट्स से इट शुड बी 1 एंड मैक्सिमम by default should be 2f, let's say, right? And also I'm going to write on validate, okay, min will be equals to mathf dot clamp, right? Min का value at minimum should be maximum, and maximum पे it can say int dot, oh sorry, it should be int dot min value, and maximum पे it can be max, so that it doesn't exceed the other value. Which is when if you attach this here, okay, इसको you can always keep it at a lower value, but you can never go above 9.83. alright. अभी हाँ श्योर यहाँ पे अलग अलग हेडर्स बन गया. दैट इज़ ओनली बिकॉज डिक्लेरेशन में मैंने हेडर दोनों पे डाल दिया. सो इसका एक ही सोल्यूशन है टू डिक्लेयर बोथ ऑफ दिस वेरिएबल डिफरेंटली, या फिर जब तक कोई और वेरिएबल नहीं बनता इसको पेट्रोल करने के लिए वी कैन जस्ट हैव दिस.
cool. Alright, so ठीक है, I'll say maximum would be 3 and minimum would be 1 for now. Alright, so ठीक है, so when I actually press play ये सब properly काम करेगा and spawn भी अपने हिसाब से होएगा. And object spawner में we do require objects to spawn. Right, that is serialized field private game objects to spawn. Right, now this is the serialized field that we have for now. Right, जिसके ऊपर आएगा elapsed time timer and we'll say कि instantiate game object object to spawn random dot range 0 object dot length. Right, so उधर इसको spawn करेगा. Easy. राइट, सो अगेन ये ऑब्जेक्ट स्पॉनर तभी एक्टिव होएगा जब मैं किसी भी इजी मीडियम या हार्ड पे जाऊँगा. करेक्ट, दैट इज जस्ट अ मिनट. हाँ, it's only going to work whenever I press any of this button. So I'll go to medium hard and यहाँ पे I'll just click कि ऑब्जेक्ट स्पॉनर को भी एनेबल कर दो. राइट, एंड ऑब्जेक्ट स्पॉनर को एनेबल करने के साथ साथ वी ऑल्सो वांट टू सेट द डिफ़िकल्टी लेवल. राइट, टू सेट कि कितना इसका वैल्यू होगा टाइमर का. अभी डिफ़िकल्टी टाइमर जो इसका सिर्फ इसका रेंज सेट करेगा कि वट एवर इसका रेंज रहना चाहिए. सो ठीक है, I guess what we can do is we can also make this variables into properties. Right, yeah, फिर we can just create a function that is going to set the difficulty of the object spawner. Right, so ठीक है, for now we are just turning on the object spawner and that's great. Right, and we do require some things onto the object spawner itself, which means मेरे को यहाँ पे कोड लिखना है कि if objects to spawn dot length is 0, in that case I want to return, that is I don't want any null reference exceptions. I'll add 4 members here and हम लोगों ने जो prefabs बनाया वो सारे के सारे यहाँ पे मैं एक एक करके ऐड कर दूँगा. कुल नया क्रेट डाला, इसने बॉम्ब डाला, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें डाली उसने. राइट, अभी गेम पैनल में मेरे को सब इतना अंधेरा अंधेरा क्यों दिख रहा है? ओके, बिकॉज उसको मैं पीछे से देख रहा हूँ. सैडली मेरा कैमरा कहाँ पे? ओके, मेरा कैमरा इधर से स्टार्ट हो रहा है. ऑल्सो अपने को कैमरा का क्लिपिंग प्लेन्स इतना नीचे है. वी जस्ट वांट 1 to 100 एंड दैट शुड बी फाइन. सो इन दैट केस इसको 1 to 100 करता है एंड जो ऑब्जेक्ट अपने को स्पॉन करना है उसको उल्टा स्पॉन करने का. ठीक है, राइट. So what I'm going to do is instead of getting game objects I'm going to get the transforms. Right, and यहाँ पे बोलूँगा कि where selected
राइट, या फिर आई कैन जस्ट से ऑब्जेक्ट एंड वर्बिटिम आगे यूज़ कर सकता हूँ, राइट. So I can just say कि I am going to spawn this object and I don't require any parent, but I do require object dot rotation and I guess इसका position लिया जाता है, right? That is vector 3.0 and then इसका rotation लिया जाता है, correct. Cool. So we now are spawning things in something. What just happened? Did it crash? सो अगेन डायरेक्शन लाइट का जो वैल्यू था 50 और -30 जो भी था स्कल आई गेस कहाँ पे बना था, कुल ना इफ यू प्रेस प्ले क्या हुआ, अच्छा यस करेक्ट, हम लोगों ने टाइप चेंज किया ना. क्या हुआ अभी इसको, यूनिटी बग probably, I don't know. हाँ यूनिटी बग लल हो गया. सो ठीक है, अब मेरे को डायरेक्शन लाइट किधर चाहिए था, एक्चुअली ये साइड चाहिए था, राइट. दैट इज 50. तो मेरे को यहाँ पे दिख क्या रहा है वो, ठीक है 50 इट इज. सो आई कैन नाउ सी ईच एंड एवरी 3D object. Cool. So they are now present here. Now I just want for them to be first of all present outside the screen. That is screen के बाहर रहने चाहिए, right. Spawn random object, right. But this is instantiating and destroying every time. Sure, this is a bad way, I know, but we'll work on a workaround, right. अभी इतना सब एथिकली किया, विल ऑल्सो डू दैट एथिकली, बट दैट इज़ नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ. द प्रायोरिटी इज़ टू मेक इट jump and get on the screen from outside. That is, we require the position that is outside, right. What is outside, right. Now first of all, to get something that is outside of the screen, we can use, or what Meet used, is an edge collider, right. लेट्स से अगर तुम लोग यहाँ पे एज कोलाइडर रखते हो, इट्स अ 2D कोलाइडर, करेक्ट. एंड इसको तुम लोग अगर ऑफसेट देते हो, जो भी है तुम लोग को यहाँ पे दिख जाना चाहिए वो चीज़.
किधर गया? So basically we want it at -6. अभी usually the value is also counted by camera का size कितना, okay, on an aspect ratio of 16:9, but that is not what we want. We actually wanted to go outside the camera, right? So for now we'll use the safe side, that is 5 or 6. ठीक है. So where spawn position, that is I am going to create a public vector3 spawn position. Alright, and this spawn position को I am just going to say it's going to replace vector 3.0. Yeah, do we even really require spawn position? Right, we also require two spawn positions, because we are not only spawning an object at a specific point, but we are spawning them at different multiple points, right? जैसे कि कभी इधर आया, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, and so on. So we do require two different points, that is min position, max position. Oops. Right, and we can call this nothing for now. ठीक है. Now we want our character, oh sorry, not sorry, character, अपना character are barrels. We want them to spawn between these points, but on these points it is only the x that will keep on changing. Y and z are going to remain the same, correct? So what we really require is a float min x max x. Alright, that is spawn position. Spawn plane. Alright, for now, and we of course know what y and z are going to be. Alright, so we'll just say public float y and z. Of course z is also not really required since it is going to be 0, right? So we can now decide y for now. Right, spawn plane में we can have this. So I'm just going to create a var position will be equals to new vector 3, जहाँ पे x is going to be a random dot range, again min x max x, and y will be equals to y. Simple. Okay, that is going to replace अपना instantiation का position for now. Alright, so we have all of this. And अभी अगर हम लोग यहाँ पे सेट करें कि y क्या रहना चाहिए, let's say y should be -6, max x should be -8 and +8. Alright, if we press play and if we now see स्कल्स वगैरह कहाँ पे बन रहा है, बराबर है, अभी के लिए -6 पे बन रहे इधर उधर,
That is exactly what we had told them, right? -6 पे बनना. But as you can see यहाँ पे at random points they are creating themselves. Now I just want to check if -8 and +8 is the best practice or not. उसके लिए मैं इसको एकदम लेफ्ट हैंड पे लेके जाऊँगा एंड इसको राइट हैंड पे लेके जाऊँगा. यहाँ पे मैं 8.75 तक जा रहा हूँ, सो 8 वुड बी समवेयर अराउंड हियर, राइट. यहाँ तक स्पॉन आएगा, दैट इज़ फाइन. That is the explain that we have defined, right? For now this is our input value. We need to automate it. Of course we will automate it later, right? So we have UI manager, difficulty settings and game manager. We have all this, and object spawner is the only thing we need to care about right now. And now we need to add rigid bodies to all these objects, right? इसका दो बार एनिमेशन बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए. दैट इज रिजिड बॉडी, राइट. वाइल ऑल्सो से एंगुलर ड्रैग सबके डिफरेंट हो गए, ऐसे जो भी है वन, आई मीन डिफरेंट एंड डिफॉल्ट, या. सो बेसिकली whenever we are now spawning this object, we now also want to add a force amount to it, alright, which means we now want to change this array type to rigid body instead, which means instantiation is going to give us a rigid body instead now, right? That is body, right? Incremental. Now if I go back to the object spawner and मैं यहाँ पे सब कुछ backspace करके वापस सेट करता हूँ, right? So now you can see I'm now passing rigid bodies, and it's going to instantiate that rigid body and going to pass me back the rigid body that was instantiated, right? So जो instantiate हुआ, that is where instantiated body, right? That is instantiated body dot add force इतना vector 3 dot up into 10, right? Force mode should be impulse, right? For now we have force of 10. Object spawner is going to add the force onto it. So if we now again press play, okay, so we can see नया ऑब्जेक्ट स्पॉन हो रहा है, लेकिन उस पर 10 का फोर्स जा रहा है, which is fine. It's great actually. Alright, so ठीक है. Now I am also going to suggest कि यहाँ पे I create a new variety force, that is public float min force max force, right? अभी सब जगह min max वगैरह लगा रहा हूँ, सो टाइमर पे मैंने min और max का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, that is min time max time, alright, ठीक है. ऑल्सो इसका मेरे को अलग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नहीं तो इट्स गोइंग टू ड्रॉ द हेड ट्वाइस, विच इज़ अ बैड थिंग. सो ठीक है, min force and max force. यहाँ पे मिनिमम फोर्स शुड बी एक्चुअली 10 and maximum should be 20, let's say. Alright, sure, you know where this is going. I am going to create a new vector 3. X पे I am going to pass on 0,
y पे आई एम गोइंग टू पास ऑन अगेन रैंडम डॉट रेंज min force comma max force. Are be sure there is definitely a way to combine all of these random ranges. Definitely a way. But ठीक है. For now it's fine. Right. Now also इसके साथ साथ I am just going to also write instantiated body dot add torque. Okay. अभी torque कैसा आना चाहिए? टॉर्क भी अलग से रैंडम होना चाहिए, राइट? दैट इज पब्लिक min torque and max torque, right? Let's say this is 5 and this is 10. Alright, so again ये पूरा चीज़ कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे ऐड टॉर्क मार दूँगा इंस्टेड, लिटरली द सेम थिंग, राइट? एंड मैं यहाँ पे डालूँगा min torque comma max torque, tweak, right? And also I want same thing on the x-axis for this one. Alright, so now you see okay, this is happening. Right, so हर एक ऑब्जेक्ट रोटेट होके भी आ रहा है एंड ऊपर तक जा रहा है. नाउ देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी वांट नाउ. किधर गया? कैमरा किधर है? नाउ अपने को चाहिए एक बॉक्स कोलाइडर. ओके, जस्ट अ मिनट. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. ओके डोकी. थैंक्स तुषार. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं एक सीलिंग लगाऊंगा सो दैट अगर मैं एक्स्ट्रा फोर्स भी ऐड करूँ अपने ऑब्जेक्ट्स पे सो दे डोंट बाउंस ऑफ. ऑलराइट, ठीक. अभी इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे रखूँगा. इट्स जस्ट दैट कि मैं इसका सेंटर ऊपर भगा दूँगा अराउंड 5 और व्हाट्सएवर. राइट, इसको अच्छे से इतने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्विच टू 2D मोड, right? And this is what we see, correct? And let us also expand this. Center should always be 0 यहाँ पे, and इसका size can expand to 20, I guess. Right, now we switch to 3D view into isometric and we expand the Z plane to 15, and this value should be negative 15 divided by 2, or basically 15 divided by 2, I guess. Right, so we get this ceiling. So basically मेरा जो भी चीज़ स्पॉन हो रहा है अभी, if मैं गेम प्ले पैनल यहाँ पे रखूँ, right,
now we can see कि ये इस एरिया में स्पॉन हो रहा है. In that case इस सीलिंग काफ़ी बड़ा हो गया I guess. A ceiling of 5 would be just fine if वो होता 10 पे. Why 10? Because अपना कैमरा 10 पे, सो इसको पॉजिटिव 10 पे डाल के नलीफाई कर देता. सो प्ले मोड में जो चेंजेस किया उसको सेव करने के लिए जस्ट कॉपी द कंपोनेंट एंड आई paste component values. Right, sure, we don't want to keep instantiating this forever, but ठीक है, अभी के लिए we are getting a bit closer. And object spawner के अंदर I am just going to give out maximum force to instead of 20 100. Now let's see what's happening. Alright, now they aren't going off. It's because they don't themselves has collider or have collider. So this is the collider for this, the collider for bomb I guess. सबको स्क्वायर ही रखने वाला हूँ मैं. yes. Alright, अभी ये जो वैल्यूज है मे बी दिस कैन बी अ बिट क्लीनर. राइट, बम के लिए वी डोंट रियली रिक्वायर मच. यहाँ पे थोड़ा सा 0.4 0.5. राइट, 0.35 and 0.35 as well. राइट, ग्रेट, जो परफेक्टली बैठ गया. इट्स जस्ट दैट सबको अच्छे से सेट करना पड़ेगा. राइट, देन वी हैव स्कल 0.4 0.5 0.4. राइट, इसको थोड़ा नीचे ऑफसेट देना पड़ेगा अपने को. Cool. Alright, so that's done. So मीत ने जो किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट के साथ, हम लोगों ने भी एग्जैक्टली वही चीज़ रेप्लिकेट किया अभी के लिए. राइट, श्योर देयर आर बेटर वेज टू अचीव दैट, बट लेट्स सी हाउ ही कुड हैव डन एग्जैक्टली ऑल दैट बेटर. राइट, सो अभी आई कैन सी कि मेरे कैरेक्टर्स या जो भी बॉक्सेस जा रहे हैं वो ऊपर जाके टकरा रहा है. जस्ट अ मिनट अगेन. Ah man, what can I even do? सो ठीक है, ऑल दिस आई गेस अपने को कैमरा का भी बैकग्राउंड वाइट कर देना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट स्पॉन होते हुए दिखे. राइट, यहाँ पे मैंने गिज्मो रखा है, सो इट्स गोइंग टू stop right there. Right, also does this change for when I am on a lower screen? No, it stays static. So what I'm going to do is इसका जो upper part है इसका size 0.1 कर दूंगा. that is काफ़ी पतला कर दूंगा size. So now it only collides on the exact top. Cool. But now this objects look a bit
smaller, right? Also bomb कुछ ज़्यादा स्पीड से चलेगा ऊपर. I also need to fix that. इसका मिनिमम लेट्स से 15 होगा एंड मैक्सिमम 30. लेट्स से आई डोंट नो द वैल्यूज़. ये मेरे को ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. एंड लेट्स यहाँ पे 15 देते टॉर्क. एंड और क्या करने का. हाँ, उनका साइजिंग यस श्योर. सो मेरा बैरल का साइज इज समथिंग लाइक दिस. मेरा बॉम्ब का साइज इज समथिंग लाइक दिस. क्रेट looks the biggest and there is skull. If we let's say तीनों को भी एक ही प्लेस में रहता है, then the crate looks the biggest, right? Then we have the skull that looks really small. So what we can do is we can maybe enhance, or so not enhance, sorry, we can upscale the skull, and that is 1.5 का scaling देंगे, right? That is 1.75 I guess. इसको भी रहता है 1.1 on link of course. And then finally we have bomb which is very short. So इसको 2 देता है या 1.75. Alright, so ठीक है. Everything that we have created or applied should be overridden onto the prefab. That is का transform override करना अपने को. Correct? So ठीक है. So now if we press play again, we can see things come in and go out. Right. Now also torque isn't necessary. That is, minimum torque is what I will always keep at 0 for now. Right. Sometimes the object doesn't need to spin. So this is fine. Now there is just one more thing कि इसका instantiation. Right. Now most of the stuff is done. We also need to now detect कि अपना mouse click पे if everything is detecting stuff or not on the mouse should also be able to detect stuff. Right, ठीक है. The object spawner is working fine. It delivers things with variables such as minimum and maximum of time, force and torque, when to and when not to spawn stuff, and so on. Alright, so I guess अपना timer भी is kind of very quick. So if I say 2 to 4 seconds, 1 to 4 seconds, अपना window of opportunity बढ़ जाता है for easy. That is, एक ऑब्जेक्ट गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, तीसरा ऑब्जेक्ट आया. नाउ व्हाट वुड यू डू आइडली. अभी मीत ने यहाँ पे क्या किया हुआ कि जैसे उसका कैमरा के नीचे ऑब्जेक्ट जाता है, राइट, उससे नीचे एक सेंसर लगा हुआ. दिस सेंसर विल नाउ डिटेक्ट स्टफ एंड इट्स गोइंग टू बेसिकली destroy them. That is what Meet has done. But what we can do to achieve that automatically is write a script onto all of the objects, right? That is object or basically prop, पता नहीं मेरे को. Right, each and every prop. Object is already a reserved class, so that would be weird if मैं object बनाता हूँ. हेलो, हाँ, मम्मी वो बिजी छू.
Yeah, prop values on become invisible, and on become invisible we can write something that is going to disable the game object. In the case of what meet useless, it's going to basically destroy the game object. Correct, that's it. Alright, so ठीक है, हर एक prop पे ये चीज़ लग गया. Done. On become invisible कब कॉल आता है? जब things out of camera जाते, even on scene. Right, so अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन नथिंग हियर, एंड हम लोग जस्ट यहाँ पे हायरार्की देखते हैं. राइट, यू कैन सी स्कल्स आ रहे, स्कल्स जा रहे, क्रेट आ रहे, क्रेट जा रहे, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. राइट, नए ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट हो रहे हैं, जा रहे हैं, सो दैट इज ऑल राइट आई गेस. Now the thing we can do to make this better is definitely pooling, right? But I guess I have exceeded all my time limit. I was supposed to run this session till 8, but it's 8:40 right now. It's because I got carried away. That is, I got interested in this project. There is definitely more to do right now, right? What I aim to do right now is to get rid of the instantiation part and to instantiate all the objects for once and keep reusing them. So we also have control over what objects will pop up. Alright, I guess मेरा कैमरा अटक गया या कैमरा का बैटरी चला गया. So I don't think कुछ बचा है अभी के लिए. Yeah, alright then, I'll go. If you have any questions, write on the chat. I'll be happy to solve them. And ये project अभी तक I guess मैंने आधा ही complete किया. It was a project created by a student named मीत नायक जो chat पर बैठा हुआ है. And उसका project का code review किया and I was trying to recreate it. So maybe he can understand, or it can help him learn on how to actually perceive everything and how to not get confused when coding stuff. Right, you confuse yourself at the very beginning and in the end you are never confused. Right, एक सॉलिड सिस्टम बना के रखना होता. अगर स्टार्टिंग में इजी वे से करते रहेगा तो एंड में बहुत कन्फ्यूजन आने वाला है. एंड always lasts longer. The beginning is the shorter path or the shorter duration of a development process. So do your trade. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पॉनर को आई गेस मैं रीफैक्टर करूँगा बाद में. एंड बस बाकी सब तो सही है, बाकी सेटिंग वगैरह बनाया हम लोगों ने, सही है सब. राइट, to replace. Alright, so again I'll still be here. Any questions? Is anyone still there? I'll have to check on YouTube. क्या था? Two watching right now, and that one would be me. Nice. Bye bye then.